Om Namo Narayanaya. Jai Mahakal, Jai Mahakali. Welcome to Vedida. Today we have with us Professor Ajay Chaturvedi. He is the author of a trilogy on time. Part 1 and Part 2, called Kal, are already available on Amazon, and Part 3 has yet to be released. We are going to have a very interesting discussion and a deep dive into the constructs of time. What is the Panchang? Panchang literally means panch, 5, ang, limbs, as in time is constructed of 5 limbs. We're going to break that down in the discussion today. Even in the Gita, Sri Krishna himself in chapter 11 verse 32 says, Aham Kalosmi, I am time, Mahakal, Mahakali, primordial beings of time. Mahakal situated in Ujjain. Is Ujjain the Indian Greenwich Meridian? What happened in the 15th century that grossly changed the evolution of the human civilization? We are going to break down into all of these different discussions of the constructs of time, the evolution of time, and leading up to the latest endeavors by Professor Ajay Chaturvedi at IIT Mandi. What is a decentralized economy? How is the Panchang related to the growth of GDP of a country? So without any further delay, let's talk and start the podcast. Welcome to Vedida podcast, Ajay. Thank you so much. Om Gurave Namaha. Shri Ganeshaya Namaha. Please tell us a little bit about your journey from New York to Uttarakhand, and then we will start plugging in stories in between. Yeah. So it's not as simple as just New York to Uttarakhand. It's like several steps, several years, many transformations. And like you rightly said, it's Kulhad economy. When the first time anybody hears it, people obviously think it's just making kulhads. It's not. It's much more complicated than that. It's more of a metaphor. But for me, like anybody else, we've grown up in India, we've grown up in a Bharat, which is very different from what it is today. ये जो mass urbanization अब हो रहा है, it was not as urbanized as when we were growing up. And the constant question that has pestered all of us for the longest period of time, like यार लोग अच्छे हैं, समझदार भी हैं, आप देख रहे हो कि Indians, Hindus are especially progressing, but India पिछड़ा हुआ nation है, third world country है, developing nation है. I mean, the kind of terminology that is being used, it didn't settle well. Especially knowing the fact कि हर कोई बोलता है जी वो तो सोने की चिड़िया था. आप कोई भी मैथमेटिकल या फिजिकल कॉन्सेप्ट बोलेगा, वो बोलेगा वेदों में है, वेदों में था. माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कहाँ है, कौन से वेद ने लिखा, मुझे श्लोक दिखाइए. अमित चतुर्वेदी, ग्रोन अप इन देवभूमि इन देहरादून. आपको वेदों की कोई वेद की किताब, मतलब पूर्ण किताब तो दूर की बात, आपको कोई प्रॉपर रेफरेंस भी नहीं दे सकता था उस समय. तो स्कूल में मुझे याद है, एंड आई वेंट टू क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, आई आस्क्ड वन ऑफ माय टीचर्स व्हाई ट्यूसडे वाज दिस पर्टिकुलर डे, कि भाई ये नहीं होता है, ऐसे होता है, धागे आपको नहीं पहनने दिए जाते थे. इट वाज अ वेरी अनसेटलिंग sort of time. ठीक है, you're progressing, you've done well in exams, तो आप चले गए, qualified, gone into a good engineering college, went abroad. You're doing well, but you're not able to answer these basic fundamental questions. कि भाई ये invasion हुए, लोगों ने लूटा, क्यों लूटा? इतने समृद्ध थे, इतने पावरफुल थे, इतने शक्तिशाली थे, तो आपको क्यों कोई लूट पाया? Those questions are the ones that stayed with me. So one incident was this in the school that, I asked this teacher and she just shut me down. I just wondered, it's just a simple question, why don't you just answer it? So lots of questions were like that. Fortunately, my father got transferred, so I ended up going to Chennai to Padma Seshadri. So, the whole thing just changed from our father in heaven to Gayatri Mantra in the beginning. और वहां से वो पूरी जर्नी मेरे ख्याल से एक तरीके से, but of course it's little steps all the time. About how old were you when you moved to Chennai? So I was 16, okay, right? 15, 16. So quite well formed by that point. At that time, but you've got these notions, I said, growing up in Dehradun, English is not your first language. Yes. So, you used to be really conscious कि पता नहीं गलत बोल देंगे, so even though I was in an English medium school, so but those things stay with you. We studied Shakespeare, Julius Caesar, Macbeth, right? Beware the Ides of March. Again, my curiosity was like, why is it Ides of March? Why is it not Ides of April?
You know, whenever you write something, whenever you say something, it has to have a reasoning behind it. You know, if I'm sitting here and ask you, Ved, what is the name of these flowers? Then I बोल दूं ये तो ऐसी है. अरे कुछ तो नाम होगा ना, मतलब you're curious. As a curious person, you want to know. I can't say मैंने अभी 10 शीशे चल के आया हूँ. Like ये शीशा क्या होता है? मैंने किलोमीटर सुने हैं, 10 कदम सुने हैं, 10 फरलांग सुने हैं, माइल सुने हैं. शीशा क्या होता है? You're curious, right? उस तरह की curiosity never got satisfied. So we just hammered things in without any explanations. Then, of course, Bits was a very, very, phenomenal change because that's where I really, came out, became a man, so called. When I got to, and again, the working life was good because, you just get into this whole run of the mill of things. But getting to Wharton after the stock market crash was one of the biggest moments because then you started to understand that dot-com boom, we were just discussing this. Yeah, we were just discussing. Dot-com boom was a result of an accounting practice, which people did. Like today, people talk about booms. वो boom हुआ, वो bust हुआ. वो क्यों हुआ is a curiosity. Yeah. So dot-com boom happened fundamentally because of the accounting practice that was followed predominantly at that time. Correct. They could book the revenue as long as the product was shipped. Yeah. So lots of these fake vendors bought godowns in Jamaica, offshore, started shipping their products and booking revenues. Yeah. Then the stock market, when the inquiry sort of happened, then people realized that the products became नहीं कुछ. इधर सारे godowns में जा रहे हैं. That's when the dot-com bust happened. Same thing with real estate crisis happened in 2008. So after going from there to the business school, sitting with the best of professors, listening to them was something which was a big eye opener. So one of the strategy professors says at that time, time is important, but timing is everything. Right. I thought this is, this is one thing I'd come back to. The universe is conscious, it's not mechanical. Right. And we are a part of it. Mm. और जब हमें वो realize होने लगता है ना, then you realize कि यार आपकी जो feelings है वो real है. If you're getting a gut feel, वो जो gut feel बोल रहे हो, it's actually a very mathematical thing. वो आपको समझने की आवश्यकता है. So when he said this, that timing is everything, I thought this is great. Yeah, I need to understand what timing is. But मुझे तो पता करना है timing किस चीज का क्या सही है. If I'm starting this interview, have I started at the right time? Is there a mathematical formula to it? And I asked him, there's like one of the best professors in the best business school. He says it's a gut feel. It's like an experience that comes to it. I thought, yeah, that's strange. Because I've grown up in a Hindu household, जहाँ पर आप छोटी सी चीज करने से पहले मुहूर्त निकालते हो. Right. What is muhurat if it's not the art and science of timing? Correct. That seed of curiosity started going deeper. Yeah. Now the background to it is, of course, my father, was a phenomenal scientist, great mathematician. I'm not just saying it because he was my father, but he was also an amateur Jyotishi. Right. And he had told things to people which they just couldn't believe. Mm. There was one time that my Nanaji, who was a commissioner at his time, so he was intellectually very, very sound, and he was commissioner in ICS, which is the British version of the IAS services. तो वो कहते हैं हम ये सब ये बकवास है. So he gave a kundli of my somebody else to my papa, and he says, so it was a girl's kundli, and he gave it under a guy's name. My father said, नहीं ये तो वो हो ही नहीं सकती इनकी, ये तो कोई लड़की है जिनके लंबे बाल है. That was the moment that my Nanaji sat down. Yeah. He said, अब आप बोलो क्या बोला. Right? Yeah. So for me, that stuck with me. Of course, I didn't go deep into it, but that moment in the business school when I started to realize that यार इनको पता ही नहीं है बोलना क्या है. After that, several, the whole thing went past about 10, 15 years. I started to, launch a company which became hugely successful, world record, and I was invited to different colleges. So, Princeton and Yale and Harvard. Every time I'd meet somebody and I'd ask them, is there a possibility of doing a study of time? And they just brushed it aside. They're like, no, it's all decided. I just couldn't understand why. That curiosity set the things in motion. And you're also the author of a couple of books on time. Yeah. Carl 1 and Part 2. Two parts to the series available on Amazon as well. Yeah. Where you break down and explain time. Yeah. So let's give a little bit of introduction and a background to the theme of time, Samay, Kal. Sure. And Kal ko we call it Kal Chakra. Yeah.
So, for example, when did man discover Yeah. that Kal is not linear? Yeah. It's circular or cyclical. 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 Yeah. So let's break that down, and then we come to Panchang, and then we come to Muhurat, and then let's just come to this thing called manifestation, Right. where I would like to, with your help, Yeah. assist in people to understand that our dharam, Sanatan, Right. is the mothership of all manifestation. Exactly. Exactly. And the wealth creators. And what the West is trying to do, and they come up with these reels on Instagram and Facebook and be like, when you manifest, you have to be very specific, state your purpose, state your specificity. Yeah. And when we talk about Muhurat and manifestation, then we'll touch upon that and we'll answer that question on how it happens in Sanatan. So let's go back to Kal, and let's say that where did Kal start from? So before I wrote those, I mean, there's a trilogy of time. The third book I'm purposely holding right now, and I'm going to release it shortly, hopefully within the next few months, because I'm waiting for a particular event that will take place. I know. Usse pehle, I wrote a book called Lost Wisdom of the Swastika, which is the foundation for Kulhad economy. Okay. So the reason for that is, and this is a discussion I was having with one of the toppers of BITS. Brilliant guy. There's a term we have, B.O.B., Bob. तो उसका नाम भी बॉब था. So B.O.B. is supposed to be brain of bits. This guy is a brilliant guy, right? And he's having a discussion with me, and he says, "But yeah, all this is bullshit because जब printing press थी नहीं थे 13th, 14th century से पहले, right? How could your Vedas be there?" And I don't want to name him over here, but this is the discussion we were having. Right. I said, that's bizarre, yeah, because there are things that I've known for a long time. Written and, reading is not the only thing that has existed. India में, oral traditions have stayed for the longest time. Correct. मांत्रिक परंपराएं हैं, तांत्रिक परंपराएं हैं, आंतरिक परंपराएं हैं. आप किसी गुरु के पास जाते हो, गुरु आपको केवल देख के आपको ट्रांसमिशन कर सकते हैं, आपको छू के ट्रांसमिशन कर सकते हैं. You've seen that famous painting where the two, fingers are touching. Yes. What do you think is happening? Half the paintings that I see in the West, which is, Greek paintings, you've glorified them, but उनको उनके मतलब नहीं पता. They've all taken from here. तो अगर आप बेसिक जो प्रोसेस है वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो there's no point. So that then defeats the purpose, because आपकी जो पूरी हिस्ट्री उस बेसिस पे है कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी. Right. That's why you're deciding. The first book I wrote after meeting my Guruji, who I met in Kedarnath. I mean, typically people say कि आप पहले आपका गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, Kedarnath. I ended up in Kedarnath and I met my Guruji there. That was the first time. That was the first time. So I stayed away landed in Kedarnath. So that was a transformational moment. Yeah, it was a transformational moment. I mean, he was 110. And you were about? I was at that time 33, 34. Okay, so about 2006, just before the before the subprime. Just before the Lehman Brothers crisis. Yeah. Lehman Brothers crisis. So it was, and they had told me all about this. And I'll come to how these predictions happen. So उस समय, that whole thing just made complete sense to me, because I realized that people are not understanding the yugas the way they are. Right. ये हमारे जो assumptions हैं पूरे गलत हैं. Right. So, okay, cross questioning. The age of the yugas, the way it's been calculated in a ratio of 4:3 to 2:1. वो सही है. वो सही है. But the number of years attributed to each yuga, like 4,32,000 years, I think, is attributed to Kali Yuga. Right. And 8,64,000, and then so on and so forth. Is that amount of period also right, or is that period wrong? That's perfect. उसमें कुछ गलत नहीं है. But they're talking about cycles. The biggest problem that happened, and this is what, again, it has to be sequentially done, so I'll come to it. Because if I just straight away through it, I don't get it. So let's go back to your Kedarnath visit. So Kedarnath visit, after that, I came back, went through a massive transformation. I mean, massive as in, my world changed, because I realized that there were a lot of things that we just don't understand. And this has to be individually done. Somebody might be really good at math, somebody might be really good at English, somebody might be really good at playing sitar, और उसको math बिल्कुल भी नहीं आती है.
the moment we start understanding this, you realize that the जो explanations है Vedas में, you need to be understanding it. Puranic stories need to be understood in the way they are written, not the way you interpret them. Okay. So they are talking about cycles. So they are talking about cycles. One. They are not talking about specific कि ये 365 days है. तो आप उसकी फिर गहराई में जाओगे. जितना भी symbolism है, everything has very specific meanings. सूर्य के रथ पे 7 घोड़े हैं. Correct. You know, my initial thing was अच्छा 7 weekdays होंगे. तो 7 weekdays ही क्यों हैं? First of all, they're not 7 weekdays. There's 7 aspects of time. उत्तरायण दक्षिणायन तो आयन है. Correct. माह है, मास है, दिन है, होरा है, मुहूर्त है. Right? That is how you form the 7 horses of time. These 7 horses are the ones that are driving it. Now, muhurt is a very important metric, which we'll come back to later. But anyway, the first book was Lost Rhythm of Swastika to explain ये जो युग है वो आपको उस तरीके से समझने चाहिए. And then the biggest thing that you hear people say is कि उस युग में जो देवी देवता थे वो इस युग में नहीं है. Yes. Right? Yes. तो आप देवी देवताओं को ही नहीं समझ पाए. Fortunately, I ended up going to a parampara, Achyutananda parampara, Achyutananda Prabhu, who wrote Bhavishyamalika, and my Guruji Pandit Sanjay Rath and my Guruma Lakshmi Ramesh, who's in Tirupati. She's the amount of wisdom that they have preserved and been transmitting is phenomenal. So Pandit Sanjay Rath himself says, if he were to talk about something, about 1,000 people will understand. When those 1,000 people talk about it in a simpler language, about 1 million people will understand. Right. And each one of those million talks about, then about 1 billion people. That is how the Gyan is. So this is Om, literally. उस ज्ञान को इतने लोग क्रिस्टलाइज कर पाते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके जाता है. So that is where the whole understanding of yugas came. So that book is written as a story book. So it starts at 9/11 because I was there. I was going for an interview to World Trade Towers, and it came down, so saved. And it ends in 2013. I was there as well. So from crisis to crisis. And so it was a phenomenal journey. So this is where it starts. And I understood that, maybe there's something missing in the narrative. So that book did okay. It became a subject, Coolhead Economy. Very dear friend, London School of Economics. He and I sat down. He said, yeah, this is just not understood to people. Why is markets closed? Across India, markets always close on Tuesdays. क्यों? आप बता ही नहीं पा रहे हो. आई एम अहमदाबाद से, उसने MBA कर लिया, उसको ये नहीं पता कि पान आज देख ही नहीं सकता कि ट्यूसडे को मार्केट क्लोज है. आप बाल ट्यूसडे को भी नहीं कटवा सकते अगर वीकडेज मैथमेटिकल हैं. तो these are the things that I thought philosophically at least people understand. वो समझ नहीं आया. That then led me to do a deep research on time. And that is what got me to Jyotish. So learning Jyotish from a parampara versus reading a book or going to a school is very different. परंपरा में आपको परंपरागत चीजें पता चलेंगी जो आपको वैसे पता ही नहीं चल सकती. So what can you tell us about time? Some of the structures of time. What are the principles it follows? Right. And how can we use that in day-to-day life? So one of the big things is that critical thinking. So Coolhead Economy is fundamentally a critical thinking subject on critical thinking. That's what we talk about. That's what we teach. That's why it's such a popular course in IIT, IIMs. The very first, the foundation, and as a strategy consultant, that's what you do all the time. That's what you're doing, critical thinking. You're like, what fits in where? And you literally just twist the problem around, you break it, you put it together, you again break it, you put it apart, You're literally going through hoops and trying to fix a problem. That's fundamentally how mergers and acquisitions work. That's how Microsoft ended up being a well-oiled acquisition machine. That's how Cisco got to me this point, because they could visualize, okay, this is how this company comes in, this is where it fits in, 6 months you're able to go through. Now, those critical thinking questions have not been asked in our own tradition. कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई अगर इंडिया इतना wealthy था, इतना powerful था, then how did we end up being here? How is it that US is developed, UK is developed when some of the studies. So answer that first. Yeah. So Usha Patnaik has done this study. She says $43 trillion, and
A lot of my friends who are investment bankers, very big deshbhaktas, यार पता नहीं ये mythical study. How is it a mythical study? She's doing a proper study and she's explained it how this happened. So that is what I started to break down. In breaking down that, you need to ask the what, when, where, how, whom. हमें बताया गया है colonization began in the 15th century. Somebody needs to tell me why it began in the 15th century. If they were really superior, they should have begun in the 14th century. 13th में करते, 12th में करते, 1st में कर लेते. There are enough records that Greek scholars were coming to India. Right. There are enough scholars and Middle Eastern scholars were coming to India to learn. There are no records of scholars going from here to learn in Greece. Correct. There was trade, there was no learning. Right. तो वो क्या सीख रहे थे? And if we are calling India the Vishwaguru, why is it the Vishwaguru? कोई बता नहीं रहा मुझे. Right. I'm asking. Vishwaguru है तो Harvard हमारे यहाँ नहीं है, Wharton हमारे यहाँ नहीं है, Yale हमारे यहाँ, Oxford हमारे यहाँ नहीं. तो what is it that you're teaching the people? And that then started to drive deeper. So those critical thinking questions are, why 15th century? 15th century में ऐसी क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी जो उससे पहले नहीं घटी थी और उसके बाद नहीं घटी हैं. ऐसा क्या हुआ कि टाइम लिनियर हो गया? If today the big debate is time is linear. Justin Trudeau makes a statement in 2015. Well, it's 2015. It needs to happen. Right. So what happened in 00? मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो BC में हुआ तो पूरे ही मतलब Stone Ages थी. There's something wrong. Right. Because अगर आप रामायण उठा के पढ़ते हैं, रामायण is fundamentally a study of time. ज्योतिष is a study of understanding time. Right. अब रामायण में भी अगर आप कोई वर्णन पढ़ेंगे कि उसकी विवाह हुआ और उसने 1,00,000 गायें जिनके सींग स्वर्ण से कोटेड थे वो दान में दी. If you're calling it mythical, well, there has to be some truth to it. Right. The amount of wealth they're talking about is crazy. Yes. Then you read the actual historical accounts, you're like, this is how much India was looted. And I've given actual graphs that India was wealthier than US even today. Right. And US is already under $40 trillion there. So why the 15th century? So those questions, the reason I'm saying this is because you have to question it from every angle. So what happened in 15th century that, enabled them? Now this critical thinking has to be done from many, many angles. The reason I'm spending time on this is because आप जब तक वो questioning नहीं करोगे, till that time होती है तो आपकी assumption है. Assumption नहीं, आप mathematically उस पे arrive कर सकते हो. Any robber, any thief who wants to steal something will plan it in such a way that he's more powerful and there's a weakness there that they can penetrate. What gave them that confidence? तो आप उसके जब narratives पढ़ते हो, the very first thing that happens is when the Europeans came and they went to any of these places, Incas in South America, to the Aborigines in Australia, to Africa, they all made fun of people who worship the sun. Right. In college, we did this play on Atahualpa where they're propitiating the sun god. So why were they making fun of the sun? Didn't it make sense? हम तो अभी भी सूर्य को अर्पण करते हैं. That was one point. The second point was, every time we talk about things, what do the British give to India? They give the railways. Okay, great, but why? The big thing that bothers us today is that US में जाके there's daylight savings time. हमारे तो daylight savings time नहीं था. हमारा winter time था, summer time था. मेरा winters है तो school 7 बजे खुलेगा, summer है तो school 6 बजे खुलेगा. We didn't really go around changing clocks, but it didn't happen in the US. I mean, I still went pre-internet boom when the time had to be changed physically. UK में भी हो रहा है, पूरे Western world में हो रहा है, वो कहीं और नहीं हो रहा है. Correct. Then you start to question, all of them came to trade for spices. Yes. आपको पान की दुकान पे आज सारे स्पाइसेस मिलते हैं. इलायची, लौंग, तेज पत्ता, सुपारी, पान, ये सब स्पाइसेस हैं. And there is a rampant कि दी इंडियन खाना तो मसालों से भरा है. तो मसाले तो ट्रेड करने आए थे आप. फिर आप जब देखते हो कि देवी देवताओं के सारे मसाले ही अर्पण होते हैं. श्री दुर्गा को लौंग, सरस्वती माता सरस्वती को इलायची. Are Devi Devtas the same as gods? Or they are different? They are different. Devi Devta, Devi Shabd, Devta word comes from Divu, which is source of light. So they are sources of light. Then you start wondering, and again, I'll talk about Peter Lacey, a dear friend, founded Circular Economy. He and I are having this discussion.
he's the head of Accenture, and he says Indians are always celebrating. India is always on a holiday. I'm thinking, but the holidays are creating value for us. आप मनाते क्यों? आप गणेश चतुर्थी मनाते हो, सरस्वती पंचमी मनाते हो, नाग पंचमी मनाते हो, ऋषि सप्तमी मनाते हो, दुर्गा अष्टमी मनाते हो, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो, राम नवमी मनाते हो. तो आप तो काल की पूजा कर रहे हो ना. Right. तिथि. They are forms of time. Parts of time. Yes. They're parts of time. तो पांचांग जो है तिथि, वार, नक्षत्र, कारण और योगा, ये 5 अंगों का पांचांग है ना. Correct. 5 तत्वों के भगवान से इंटरेक्ट करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों को सूचित करता है, 5 कर्मेंद्रियों से आप एक्ट कर रहे हो. तो आपकी तो बड़ी मैथमेटिकल चीज है. 2015 means nothing to me. Because अगर सब कुछ मूव हो गया तो where is 2015, like literally. So that then started to make room in my head, clubbed with the fact that my professors were not able to answer why timing is important. They think Muhurta is mythical. They think everything is mythical. Jyotish is also mythical. Then you start wondering, यार आप अगर सभी कुछ mythical है and you're working on a predominantly decimal system, then why does a day have 24 hours? What exactly is happening at midnight that day is changing? आप तो mythical बोल रहे हो तो कभी भी change कर दो उसको. If we say that a kid is born tonight at 2 a.m., you'll say that the kid is born on Thursday. Right? Because the day has changed. Yeah. But वैदिक परंपरा के हिसाब से तो it's still Wednesday, बुधवार है. क्योंकि वार अगर अग्नि है तो वो तो सूर्य पे बदल रही है ना. These questions then got me to a point where I started to ask the fundamental questions which people are not able to answer. And none of the best of the professors, best of the known people could answer why 7 weekdays, why 24 hours. अब इस सबको क्रिस्टलाइज करके आप फाइनली इस पे आओगे भी 360 डिग्रीज कहाँ से आए. अगर आप गूगल करते हो, चैट जीपीटी पूछते हो, इट सेज Babylonians did this, Sumerians did this, Egyptians did this. मैं नहीं पूछ रहा हूँ करते क्या थे, मैं पूछ रहा हूँ क्यों होता था ये. वो खोदते खोदते आप फाइनली पहुंचोगे. ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको केवल वेदों में, सूर्य सिद्धांत में और पुराणों में मिलेंगे. Correct. Correct. Once that becomes clear, then you start to understand. And it's not like some mythical story. It is very clear. Rishi Darghatmas is looking at the sky. He says 720 अहोरात्ras, मतलब 360 दिन, 360 रातें. 24 घंटे इसलिए क्योंकि 30 अगर दिवस हैं तो 720 divided by 30 is 24 होरा. होरा is fundamentally अहोरात्र, मतलब 12 राशियों में 24 होरा है, एक राशि में 2 होरा है. But वो होरा is a division of time, it is not a measurement of time. फिर जब ये पूरी पढ़ाई शुरू करी, अध्ययन शुरू करा, and then I got into परंपरा. Pandit Sanjay Rath is, I mean, he should get like some 15, 20 Bharat Ratnas and Nobels, because the kind of knowledge that has been crystallized by our gurus is incomparable. It is out of the world. Do you think this is very difficult knowledge, or this is knowledge pretty much graspable by everyone as they grow? You have to make an effort. You have to make an effort. You know, problem आज ये है, आज आपको सारे I believe in science मिलते हैं. The word belief itself was coined in the 15th century. तो 15th century में ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, like 15th century में ऐसा क्या हुआ था? वो 15th century में accidental discovery of the clock. They came out with an escape mechanism कि भाई ये टक 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 मैकेनिकल हमने ऐसा सिस्टम बना दिया जो अब पूरा सिस्टमेटिकली चल रहा है. Pendulum, the pendulum. Pendulum उसके बाद escape mechanism होता है. It's basically for controlling water flow. So escape mechanism, somebody would have come up and like, okay, great, this is how it can be done. So the escape mechanism है, उस चीज के बेसिस पे सबसे पहली क्लॉक बनी. The underlying assumption was that Greco-Roman concept of 24 hours का, जब आप उसको खोद खोद के देखते हो, कोई Greco-Roman scripture है ही नहीं. This is what I've done in my thesis also. Right. तो वहां से फिर आप इन सब चीजों को बिल्ड करना शुरू करते हो. अब अगर 24 हो रहा है और 7 ग्रह हैं, वेदों में कभी भी प्लूटो और नेपट्यून को ग्रह नहीं बोला गया. Correct. They've recognized them, but they're saying they don't affect human lives because they're not, Pluto की जो revolution cycle is so long that it doesn't affect every life, so it can't be generically taken. But science is a Pluto ग्रह है, Pluto planet नहीं है. So science has been going back and forth. How did science come about in the 15th century? The question is, अब आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वेदों में गुरुत्वाकर्षण का वर्णन है. ऋषि पिपलाद गुरुत्वाकर्षण का वर्णन कर रहे हैं कि आपकी प्राण अपान वायु जो है गुरुत्वाकर्षण से कंट्रोल हो रही है. अगर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है
कोई ग्रह बड़ा है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, तो आपको लाइफ इलॉन्गेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राण वायु हल्की हो गई। An average human breathes about 21,600 breaths, sunrise to sunrise. आपने प्राणायाम से आधी करी, आपकी आयु दुगनी हो गई। Correct. So, what did Galileo do different that they had not already done? You find out Galileo gave you 9.8 meters per second square. Where did the second come from? Nobody's asked this question. So people say, नहीं नहीं ये तो है, नहीं कहाँ से आया भाई? अभी मैंने आपको शुरू में बोला ना कि मैं 4 शीशे चल के आया। The first question, शीशा क्या होता है? Why aren't we asking what is the second? Where does it come from? It's an assumption वो 60 minutes once hour, 60 seconds 1 minute and 24 hours. कहाँ से आया? आप तो metric system में चल रहे हो ना? The fundamental definition of measurements is not there. A civilization can be a civilization. We can be civilized when we do a आदान प्रदान. बार्टर जिसको बोलते हैं ना, मैं ये दूंगा आप वो देना. जब तक की अंडरस्टैंडिंग है भाई ये ठीक है. मैं नहीं कह सकता मैं आपको 4 सोने के बिस्किट्स दूंगा और आप मुझे 4 प्लास्टिक की प्लेट्स दे देना, इट्स ऑल इक्वल. इट्स नॉट. तो वो तो अनसिविलाइज्ड हो गया ना. सिविलाइज्ड का बेसिस ही है दैट द एक्सचेंज इज मेजर्ड. Yeah. So the basis of measurement was only in India. Or foundation of basis of measurement is only time. So how did we measure time? We Indians. So 24 hours अभी तक तो हो गया division of time. Now coming to measurement. So this takes a long, understanding. यार आप पढ़ रहे हो क्यों नहीं यार समझ आ रहा है? जब आप पुराणों का अध्ययन शुरू करते हो, वेदों को पढ़ना शुरू करते हो, या आपको कम से कम एक तो वेदांग पता होना चाहिए ना. Right. I can't say यार वेद यार let's do an operation. हम में से कोई डॉक्टर नहीं है. नहीं यार कोई नहीं, एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे बस ऑपरेशन कर देंगे किसी का अपेंडिक्स का. अरे यार तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम्हारे पास टूल भी नहीं है. तो आप कैसे बोल रहे हो कि कोई इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी है और वो वेदों को एनालाइज कर रहा है? आपके पास ना तो टूल है उसको एनालाइज करने के लिए और ना आप ये कर पा रहे हो. That becomes visible until it does not become visible until you start to study one of the Vedangas. जब आप एक वेदांग पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि पुराणों को पढ़ने का जो ये है इस तरीके से है. It can't be read like a history book or a math book, or right? It's different. हर पुराण में काल गणना का एक चैप्टर होता ही होता है. उसमें सबसे पहला वर्णन ही वो ये दिखाते हैं कि भाई पहले सबसे पहले काल है, काल के 3 गुण हैं. एक परमाणु अणु यहां से ये धीरे धीरे घटिका, then मुहूर्त, and it starts over there. So then it finally comes to a point where Ved Vyasa reveals the Ghatika measurement in every Dwapar Yuga. अच्छा, पहली बात ये, आप अगर सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति से आते हो और आप, again this confusion that people have, I'm not religious, I'm spiritual. The moment you say you're spiritual, you're already Hindu. Correct. ठीक है. आप यहाँ पर एक संकल्प करोगे, मम नाम नक्षत्र गोत्र राशि श्री श्वेत वराह कल्पे, बिकॉज वो कल्प में अभी हम हैं. वैवस्वत मनवंतरे 28वां कलयुगे प्रथम चरणे. ओके, अष्टविंशति तथे 28वां कलयुगे प्रथम चरणे. 13 पौष मास कृष्ण त्रयोदशी तिथो विशाखा नक्षत्र. इंसिडेंटली आई एम विशाखा नक्षत्र. टुडे विशाखा नक्षत्र. ओके. योग कारण बुधवार जम्बू द्वीप भारतवर्ष दिल्ली क्षेत्र हरियाणा क्षेत्र. दैट इज हाउ इट गोज. ये पूरा का पूरा संकल्प जो है आप स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट दे रहे हो ना. Correct. I have never seen a scientific experiment where I go, I'm mixing sodium chloride with H2O. It's December 17th, 2025. It doesn't make sense. It doesn't affect. But the entire sankalp is what is determining this. आपके सारे सूत्रों में, शास्त्रों में आरंभ भी वहां से होता है. श्री राम का जन्म कब हुआ? चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी. सारे ग्रह उच्च के थे, बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में थे. 23वां त्रेता युग है. I mean, they are giving us exact space and time coordinates. Right. Now I've taken this out. I'm saying, then यार we can do operation with a screwdriver. अरे भाई तुम डॉक्टर नहीं हो, क्वालिफाइड तो छोड़ की दूर की बात है, टूल भी तुम्हारे पास सही नहीं है. अच्छा एक सेकंड, आपने अभी कहा कि राम जी 23वां त्रेता युग में बोल रहे हैं, जो हम रामायण पढ़ रहे हैं अभी, जो हम पढ़ रहे हैं, मगर हम 28वां कलयुग में है. कलयुग में. हाँ, 28वें. बीच में 5 साइकिल हो चुके. हाँ.
what is revealed to you. Again, this is what people don't understand. You know, consciousness. You know, the moment science has clubbed everything together, आप वहीं से शुरू करते हो. That's why it's a bit tough to understand. क्योंकि आज सब लोग कह रहे हैं भाई हमें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. अरे साइंस टाइम समझता ही नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग कहां से लाओगे? वे तो पूरी टाइम की स्टडी है, ये पूरी स्पेस की स्टडी है. मतलब मैं भाई डबल पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर हुई, उससे फर्क ही नहीं पड़ता. जो सब्जेक्ट है आपको वो समझना पड़ेगा ना. I might be a really good, wrestler. Doesn't mean I can cook really well. नहीं तो ये मतलब पहले आप ये बताओ कि ये काला का चक्र शुरू कहाँ से हुआ? तो अगेन you have to understand these are all cycles. तो अभी हम कल्प की बात करते हैं. हाँ. श्री श्वेत वराह कल्प है. This is one of the days, and I've explained. I don't know if you have a copy of my book, but it starts with the day of Brahma. Correct. This is one of the day. Yes. परार्ध. तो यहाँ से वो स्वयंभू मनु है. स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट हुए मनु. हर मनु एक मनवंतर का है. स्वरोचिष मनु, देन स्वरोचिष मनु, ऐसे तीसरे ऐसे मनवंतर है. अब आप इसमें आए 7वें मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर. इसके बाद वापस जाना शुरू होगा. ओके. तो सारे पुराणों में वर्णन है कि सूर्य की 16 रश्मियां हैं स्वयंभू मनु में, और यहां तक आते रहते एक रश्मि है. तो आपके सूर्य की जो ऊर्जा है वो 16 से 1 में पहुंच गई अभी. टुडे नासा इज सेइंग दैट द सन इज लूजिंग एनर्जी. राइट. इट इज सेइंग दैट द मून इज रिसीडिंग. राइट. It doesn't matter if it's receding by 3.8 meters per second or meters per year. What matters is that it's moving. Correct. You can't say what it moved back by 2000 years ago. You can't say what it was a million years ago. You can't say what sun's energy. आपके पास है ही नहीं वो. तो आप फिर इस पे आओगे भाई ये सब ठीक है, आपने मेजरमेंट शुरू कहां से किया? वो 15th सेंचुरी में आओगे आप. उन्होंने डिविजन ऑफ टाइम को फिक्स करा, उसके 60 पार्ट्स करे, उसके वो क्यों करे वो भी मैं उसको बता सकता हूँ. Because eventually it's, होरा, घटिका, विघटिका, वो सारे 60 के हुए ना. Because घटिका is 60 घटिका from sunrise to sunrise. जो घटिका है वो आप कभी भी अगर कुछ देखोगे, what is it that is connecting me to the universe? It's not my hands, my feet, my voice, it's my breath. अब अगर मुझे कोई भी ग्रेविटेशनल पुल का कुछ मतलब मुझे मेजर करना है कि how is the moon or the sun or anything else connected to the earth, I'll determine it by air, plants, jungles, oceans, rivers. What's that one phenomenon which is visible to the naked eye? It's the ज्वार भाटा, the high tide to low tide. Right. तो जब आप high tide से rise करते हो, the moon is right overhead. अब moon is here, the high tide is here. Right? As the moon moves, it's moving in the same direction as the Earth's rotation. But it takes 25 hours, so it's receding back by 1 hour every day. ये आपकी तिथियां फॉर्म कर रहा है. करेक्ट. अब आप रियलाइज करोगे कि अगर आपको मून वाटर का रिसेशन पता करना है, यू विल हैव टू मेक समथिंग व्हिच इज एज कंटीन्यूअस एज द वाटर इटसेल्फ नाउ. यू कांट से अच्छा मैं स्केल लेके मेजर करता हूँ. टाइम कैसे मेजर करोगे? उसी से मेजर करो ना. तो दे मेड अ पॉट. पॉट में एक होल बनाया, तो ड्रिप 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 करके करेगा, तो द होल पॉट एम्प्टीज आउट. विल बी एबल टू टेल कितना है. इतने पॉट जब खाली हो जाएंगे तो वी कैन टाइम इट. Natural measurement of time is this. Ghatika is the term that is used here. Narigai is the term that's used in Chennai. All because of the pot. Ghat, because of the pot. Ghat. इसी से यही सारे रूट्स हैं. घटना यहीं से आया, घाट यहीं से आया, घटिका यहीं से आया. तमिलनाडु में नाजगाई है. All the other places, the words are exactly the same because they're making pots. Right. This is the deep underlying reason why I wanted to have it as cooler, because mud has to be very important. Yes. Okay. So anyway, so घटिका. तो घटिका जो है when they started to time it, अब इस घटिका का वर्णन आता है सारे पुराणों में. स्वर्ण शलाखा 6 माशे की, इतना बड़ा होल ऐसे होगा, और वो 1 प्लस जल. ये मूवी आई थी मोहनजोदड़ो. उसमें about 15-20 minutes down in the movie they have this, वो कहता है एक पहर बीत गया. वो घटिका यंत्र उसमें दिखाया है. ठीक है. तो वो घटिका यंत्र हमने आईटी मंडी में बनाया था. That घटिका यंत्र is very specific because it is changing. It's 60 घटिकास from one sunrise to another sunrise. वो मेजरमेंट कैसे है, that's a technical thing. वो समझने के लिए आपको थोड़ा वो समय लगेगा, because that is connected to the gravitational pull. Right. Gravitational pull change होगा तो ये भी change हो जाएगा. अब वो आप समझ नहीं सकते because you are in a system.
एक मछली को अगर आप समुद्र से निकाल के एक बड़े से खारे तालाब में डाल देंगे तो बताएगी कि भी कुछ बदला है, लेकिन बता नहीं सकती क्या बदला है। Right. इट्स द सेम ओवर हियर, यू आर इनसाइड द सिस्टम, यू कांट रियली टेल क्या हाँ कुछ बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, बट यू आर इन द सिस्टम। दैट इज व्हाट द खटिका इज, दैट इज ओनली इन इंडियन लाइक वैदिक कल्चर को, और कहीं है ही नहीं। साइंस टेक्स दिस मेजरमेंट फ्रॉम हियर, उन्होंने वो लॉक कर दिया 15th सेंचुरी में। I thought they were masters of time. That's it. We mastered time है, कहानी सब कुछ है। अब आप जब पौराणिक कथाओं में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण जब छोटे हैं बचपन में वो नटखट हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो माँ यशोदा उनको आके बोलती मैं तुम्हें बांध दूंगी। एंड ही सेज नहीं नहीं बांधना नहीं बांधना, तो शी सेज नहीं मैं बांधूंगी, तो वो रस्सी नाप के लाती हैं, वो बांधने की प्रयास करती हैं, वो छोटी बढ़ जाती है, कहती है रस्सी कैसे छोटी बढ़, तो नाप के लाई थी। तो फिर दूसरी बड़ी रस्सी लाती है, वो भी छोटी पड़ जाती है, कहती है श्री कृष्ण आपको बंधन पसंद नहीं है। नहीं बिल्कुल बंधन पसंद नहीं है, लेकिन आप प्रेम से बोलेंगे तो मैं बंधने के लिए तैयार हूँ। इन भगवत गीता ही सेज कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ, मैं समय हूँ। We've been reading Oppenheimer says I am Vishnu, I am become death. अरे नहीं, मतलब that is the rawest display of arrogance and ignorance that I've seen ever in my life. और वहां से then I started realizing यार ये तो पूरा मतलब समझे ही नहीं है। तो आप अगर कोई पुराण का अंग्रेजी वर्णन मतलब रूपांतर पढ़ रहे हैं तो it doesn't have anything। वो तो चीजों को जो नहीं समझ में आए उसको वैसे ही mythical करके उसको प्लास्टर ऑन द कार्पेट, you've not understood it। That is where it starts। तो घटिका को उन्होंने फिक्स करा, आवर्स को फिक्स किया, डिवाइड करके, then the whole narrative comes on time travel possible है, H.G. Wells writes about time, brief history of time, brief history of time पढ़ो आप। Dr. Stephen Hawking doesn't talk about Indian Vedic civilization, he says oldest civilization Islamic, Jewish and Christian। भाई Vedic civilization कहाँ गया? उस किताब को मैंने 4 बार पढ़ा है, उसमें ना तो ये पता चल रहा है 7 वीकडेज क्यों है, 24 घंटे क्यों है, 60 मिनट क्यों है, आप वो चीज ही नहीं बता रहे हो। तो इट्स लाइक सेइंग brief history of Ved Iqbal and I'm not talking about his name, not talking about his age, not talking about where he was born। तो बात किस चीज की कर रहे हो भाई? वो हिस्ट्री क्या होता है? आप ऐसी फिक्शन लिख रहे हो? करेक्ट। So that's really really interesting and giving a little bit of. So let me come to one quick point about the creation of the universe. When you talk about a Big Bang theory of space, now the creation of space, is that the causative effect to which time is a byproduct? Or is it time being the main thing and creation of space is the byproduct? So again, this is, you can't, there's no simple answer to this, but I'll try to explain it. क्योंकि आपका assumption ये है कि there's an observer। हम जो वैदिक परंपरा में शून्य है, शून्य मतलब नथिंग, देयर इज नथिंग, राइट, नो ऑब्जर्वर। आप तो एक लेके चल रहे हो, एक ऑब्जर्वर है। आप कभी भी देखोगे ना, देयर इज अ कर्ता दृष्टा साक्षी, करेक्ट, you know, correct the triangle of the experience is explained in psychology, they talk about it and so all of that। Only recently introduced it, I explained that in my first work also। मुझे लगता था शायद लोगों को समझ में आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो ध्यान अवस्था में जब जा रहे हो तो आप कर नहीं रहे हो, फिर आप दृष्टा बन गए, साक्षी बन गए, then you become the witness। So when you start to understand a bit of that, then you say okay, पहले चेतना थी, और मैं बड़े सिंपल टर्म्स बता रहा हूँ, फिर काल है, काल के 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों का जो इंटरप्ले है उससे आप काल एक्सपीरियंस कर रहे हो। श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं काल हूं, काली काल है, करेक्ट। हम तो महाकालेश्वर की पूजा करते हैं भाई, यस, वो काल ही है, यस। उनको प्रसाद का क्या चढ़ता है, भोग जिस चीज का, भांग का, डिमोनाइज किया भांग, भांग को, वो उसको ड्रग बोल रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड the Europeans didn't come to India to colonize it, they came to destroy it। Because it is such a powerful thing। यही गज़वाए हिंद भी है। तो डिस्ट्रॉय करना क्या चाहते हैं? Ask a Muslim when does he celebrate the birthday, his birthday or her birthday? They don't celebrate birthdays। क्यों? अब आप उसकी गहराई में जाओ। जो यूनिवर्स का क्रिएशन है उसमें सबसे पहले चेतना काल। So काल के जो इंटरप्ले गुणास हैं, दिस इज
Rajas Guna is giving you the day and night. Hmm. Sattva Guna is giving you the years. Hmm. And Tamo Guna is the expansion and contraction. So Mahadev is giving you the yugas, Shri Vishnu is giving you the samvatsars, and Brahma is giving you the days. That's why all the asuras have always fought Shri Vishnu. अब वो बहुत गहराई में जाना है, आपको समझना है कि ये देवी देवता क्या है. There is no definition of like there's a white bearded man sitting in the. There's symbolism. Hmm. वो symbolism आपको समझना है क्या है वो. Hmm. A Bluetooth icon in your phone is not Bluetooth itself. Hmm. That's only a icon that indicates that now it's alive. Right. So beginning of the universe is that. Hmm. The thing that we've noticed in the Western appropriation of things is हल्दी दूध का टर्मरिक लाते बन गया. न टर्मरिक वहां पर है, न टर्मरिक की बेनिफिट्स कहाँ है डॉक्यूमेंटेड है, उनको ये पता है. बट टर्मरिक लाते सेल बड़ा अच्छा हो रहा है. Hmm. For $10 or whatever. Yeah. Yeah. हल्दी कहाँ ग्रो हो रही है? मेन इंडिया. India. 90% is in India. Hmm. 2-3% is in Pakistan, 2-3% is Sri Lanka. उसमें भी 90% में majority is in उत्तराखंड. Right. आज उत्तराखंड के फार्मर्स आर लेटिंग गो हेल्दी. वो कह रही है कि हमारे मंडी में रोक रहे हैं, हल्दी बेचने नहीं दे रहे हैं, 40 रुपए किलो बिक रही है, Hmm. जबकि हल्दी इज गोइंग एट 400 रुपीस अ केजी. सो appropriation begins with ignorance because they don't realize. So they are ठीक है यार कुछ ऐसा है. तो Big Bang comes from there. There is no basis of Big Bang. Like it's an assumption. Okay, great. अब let's assume it is Big Bang. तो अगर Big Bang हुआ boom, तो it will expand Right. or it will contract. Uh, It can't like just lock here, no? uh, Unless we are saying in this locked state, जो मतलब momentary lapse of movement है, in that moment is what we exist. I'll accept it. लेकिन अगर expansion it's contraction है, continuous expansion. What? तो अगर आप expansion contraction कर रहे हो, जो मैंने अभी नासा का भी कोट किया, हाँ. and this, again I've spent about 20 years on this, so I know people will say नहीं scientifically you don't understand. Sorry, you have to justify it. If NASA itself is saying sun is losing mass and moon is moving away, the days are getting longer, or they might have been getting shorter. Hmm. That is the indicator. That is how you're connected to the universe. It is not mechanical. Hmm. अगर वो नहीं है, तो you're in a conscious universe. Because you're not controlling what the movement is. अब उससे आते हैं हम गुणों पे. अगर सत्व गुण है, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल ठीक रहेगी. वही बोलते हैं कि भाई सत्व गुण कंट्रोल करना है, ये करो. Hmm. राजस गुण कंट्रोल करना है, ऐसे करो. Hmm. तमो गुण है तो बड़ी हीट होगी, लेथार्जी होगी. Hmm. Right. Empty spaces will come up and you'll grow bigger. That's Yeah. what is happening. तमो गुण. Hmm. It is not entropy. It is far deeper than that. Hmm. It is not कि यार आप इसको gases को मिक्स करोगे तो बड़ा random movement होगा, then it will come to a stable state. वो stable state कभी है ही नहीं because everything is moving. Hmm. If suddenly somebody starts firing rockets, मतलब अभी जो कुमार विश्वास is making joke कि पूरे साल Elon Musk कितने rocket fire कर रहे हैं, यहाँ पर यूक्रेन रशिया में गोलाबारी हो रही है, Hmm. तब तक वातावरण को कुछ नहीं हुआ. Hmm. आप 4 पटाखे फोड़ोगे और ओजोन लेयर में छेद होने शुरू हो जाएंगे. Because so then you realize यार ये कुछ बड़ा है which we are not able to understand. वो ये है. हाँ. So Big Bang, yeah, that's a theory, but I'm like not inclined to look at that theory because after that moment, the first thing that comes up is time. Hmm. काल के बाद ही वो स्पेस है. वो कहता है परमाणु को जितना बनने में समय लगा, Hmm. वही स्पेस भी है. So in the beginning there is only space and time, but time is the only thing that is there. So space is coming out of time. That is why time is the only non-negotiable. You can say, had I got medicines, I would have survived. Hmm. Had you got medicines is not the point. The point is, if you had enough time, medicines would have been got. Even if it was $1 billion, you could have taken time. फिर आप समझते हो कि असुरों ने केवल अमृतत्व क्यों मांगा? 5000 केजी सोना नहीं मांगा. पहली बात तो केजी तब थे नहीं. Hmm. Why is that? Because time is the only non-negotiable. हम केवल काल की पूजा कर रहे हैं, हम स्पेस की पूजा नहीं कर रहे. Hmm. Once you lock time, then you think, और वही असुरों ने किया है सबने. तो टाइम पे आते हैं हम 2 मिनट. हाँ. टाइम के 5 अंग है, पंचांग. आप हर एक अंग को थोड़ा विस्तार पूर्वक Yeah. समझाइए. इसमें I think we should come back later कुल्हड़ economy because we started out with that. नहीं यार, देखिए तो कुल्हड़ इकोनॉमी. तो पंचांग 5 अंगों का है. तो 5 अंगों के भगवान है तो 5 अंगों का ही पंचांग भी होगा. 5 अंगों है, उसमें तिथि है. तो तिथि के बारे में पहले तिथि का थोड़ा सा So Tithi is fundamentally the ratio, I mean the angular distance between the sun and the moon.
राइट अब आप ये समझिए कि तिथि वो है जो सूर्योदय पे है एंगल। आप बोलोगे नहीं वो तो पूरे दिन बदल रहा है ना, दैट्स नॉट द पॉइंट। सूर्योदय पे जो एंगल है दैट इज व्हाट इज गवर्निंग एवरीथिंग फॉर यू, दैट्स व्हाट इज कंसीडर्ड एज तिथि। तिथि चेंजेस एट एवरी सूर्योदय। नो व्हाटएवर तिथि इज एट सूर्योदय इज व्हाट वी कंसीडर एज अ तिथि फॉर द डे। फॉर द डे। आज त्रयोदशी तिथि अगर 12 बजे खत्म होती है ना, दिस इज द टेक्निकल डिटेल दैट वी नीड टू डिस्कस विद द हिंदू सोसाइटी, कि आप अगर कंसीडर कर रहे हो कि वो क्लॉक इज शोइंग मी दिस, यू शुड कंसीडर द तिथि आज जितने भी बजे वो तिथि बदल गई, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज सूर्योदय पे जो तिथि है आप वो कंसीडर करोगे, दिन के लिए वो तिथि है, वो तिथि है। हाँ। सूर्योदय से सूर्योदय वो तिथि है आपकी। बट तिथि का जो मेजरमेंट है वो आता है आपके चंद्रमा से, चंद्रमा से, because the moon is moving, so sun हाँ। moon angle is what we हाँ। now तिथि is जल, जल तत्व, जल तत्व। हाँ। तो जितनी भी रिलेशनशिप डिटरमिन्ड बाय जल तत्व। करेक्ट। तो अब अगर मून इतना मूव किया दैट मींस द हाई टाइड इज हियर बट आप यहाँ पर हो, अब इट इज अफेक्टिंग यू नो, दैट इज हाउ तिथिज आर अफेक्टिंग। प्लस देयर आर डिफरेंट नेचर्स ऑफ द थिंग्स व्हिच इज गोइंग डीप इनटू पंचांग, लेट्स नॉट सॉर्ट ऑफ What can तिथि tell us about us as a person? हाँ, सो तिथि इज, अब जैसे एकादशी तिथि आपने व्रत हाँ जी, क्यों रखा व्रत? आपका मंगल कंट्रोल करने के लिए, राइट, एंगर कंट्रोल करने के लिए, मोक्ष के लिए, दैट इज इट्स पॉपुलर। आई डू द्वादशी फास्ट बिकॉज़ दैट्स व्हाट माय गुरु हैज टोल्ड मी। द्वादशी का कोई महत्व? हाँ, अलग-अलग तिथियों में बहुत महत्व है वो। I mean, we'll then go deep into so तिथि, let's just right तिथि, that's it तिथि, okay, and corresponding to जल जल तत्व। तत्व। वार इज अग्नि तत्व, वार इज अग्नि तत्व। तो सूर्योदय पे बदली है वार, अब वार 7 होते हैं, वार 7 अब होते हैं। 7 क्यों होते हैं? जब आप होरा देखते हैं, हाँ। अगेन कमिंग बैक टू द सेम ओल्ड थिंग, whenever they start only with 7 bodied grahas, करेक्ट, which is सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, that's it। जब आप इन ग्रहों को समझना शुरू करते हैं तो वो ग्रहों का सारे वर्णन हर जगह उसी में है। आप अगर नवग्रह स्तोत्र कर रहे हैं, नवग्रह स्तोत्र में ये 7 ग्रह हैं प्लस राहु केतु है, करेक्ट, इन दैट ऑर्डर, राइट। बृहस्पराशर होरा शास्त्र में वो 7 ग्रहों के वीकडे ऑर्डर में है। वो हमें वो ऑर्डर नहीं दिया हुआ जो हमें ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ाया गया। हाँ, पहली बात, माय क्वेश्चन वाज यार ये सोलर सिस्टम की फोटो किसने खींची? इट्स एन इमेजिनेशन, राइट? राइट, यू कांट गेट अ क्लियर पिक्चर फ्रॉम अ सीसीटीवी कैमरा। हाँ, और आप बोलोगे 50 मतलब यू नो अराउंड 70-80 years ago somebody made this, that's an imagination of the person। तो जो ऑर्डर हमें बताया गया वो ऑर्डर तो नहीं है। The order that we the are order in the नवग्रह स्तोत्र is different because आपके सोमवार again so correlating with the aspect of the sun सूर्योदय, हाँ। सूर्योदय में आपने तिथि भी डिसाइड करी और सूर्योदय के होरा, हाँ। होरा का जो मालिक है, राजा है, आप जिसको भी बोल रहे हो स्वामी है, वो डिटरमिन करता है उस दिन का वार। नहीं, वार डिटरमिन करता है उस दिन की तिथि का। वो I'll come to it। सोमवार सोम हो गया, मून हो गया, सबसे पहला होरा मून का है। I'll come to it। So basically आपको बताया गया इट्स मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। हाँ, वो तो क्रोनोलॉजी में बताया गया। क्रोनोलॉजी में यार आप कह रहे हो ये फूल जो है वायलेट है, ये भी वायलेट है, ये भी, लेकिन हम स्टडीज के पर्पज से इसको ब्लैक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? आप पूरे सप्ताह के दिन है इस ऑर्डर में कर रहे हो, आप अपने बिजनेस ऑर्डर में कर रहे हो, पूरा दुनिया इस पे चल रही है, लेकिन हमें ऑर्डर वो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप बृहस्पराशर, होरा शास्त्र, नवग्रह स्तोत्र कुछ भी उठाते हैं, कोई भी वैदिक परंपरा से कोई टेक्स्ट उठाते हैं, उसका ऑर्डर वीकडे ऑर्डर है। That's something that you know should surprise you। because आप उसको समझना शुरू करते हो, ये वीकडे ऑर्डर्स उसी में है। So the weekday order is because there's a proper sequence that they've taken। So for example, Shani is called Manda। तो वो कहते हैं the first ग्रह you take is the furthest one। Then you come to the fourth from there। और वो फोर्थ क्यों है? क्योंकि अगर आपके 24 होरा हैं और आप हर होरा पे एक ग्रह को मैप करते हो, तो 21 होरा में 3 बार ग्रह मैप हो गए। उसके बाद चौथा होरा जो होगा, चौथा होरा फ्रॉम दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द फोर्थ ग्रह फ्रॉम दैट। सो सन, देन कम्स मून, देन कम्स मंगल, राइट? So that whole thing I've explained in the book also in detail। Yeah। That is how the 7 weekdays come into picture। Right। They are affecting you। Rahu and Ketu are not affecting you the way the body grahas are affecting you। Yeah। That is why 7 weekdays। That is a weekday order also। Now once this is fixed, then you understand कि तिथि का भी order वही है।
प्रथमा तिथि जो है वो सूर्य की है, द्वितीय तिथि चंद्रमा की है, तृतीय तिथि मंगल की है, चतुर्थी तिथि बुध की है, ऐसे चल रहे हैं ऑर्डर्स। जितने पुराणों में वर्णन है तिथि के वार, तिथि पे तिथि के प्रसंग है, तिथि के महत्व है, आपको कोई व्रत रखना है उस तिथि पे रखोगे, उस वार पे रखोगे। दिस इज अ डिस्कशन पीपल हैड कि भाई वार तो वेदों में डिस्क्राइब्ड है, एंड आई हैव अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक ऑन दैट। If you take CBSE textbooks of 12th grade for physics and mathematics, mathematics की book में CBSE के textbooks में आज there's no word called acceleration. That doesn't mean the mathematician doesn't know acceleration. इसे यार वो तो calculation दिखा रहा है, application in the physics books. तो जब आप वो समझोगे, the weekdays can't be taught, but you know there is a very clear understanding that the beginning is on a Sunday. इतवार पे है, रविवार पे है, सूर्य के दिन पे होगी ना, the सूर्य is the primary one. So it starts from there. Now after that comes nakshatra. So var is Agni, nakshatra is Vayu. The Chandrama is going through all the nakshatras, one nakshatra. That's the 27 mansions of the moon. And there are different stories that you can understand it with, but that is what is related to Vayu, which is related to life. So nakshatra के ही जो 27 नक्षत्र है, 4 पद हर नक्षत्र के, तो 108 पद हुए. So the pranayams are 108 types of pranayams. Now today, West is talking about thoracic breathing. Well, where did thoracic breathing come from? I mean, they're talking about scientific research and all that. How do you get to 108? आपने तो पहले ही उसको difficult बोल दिया. You know, that's the reductionist approach. आपने पहले ही उसको अगर नकार दिया है, तो फिर आप उसको वापस अप्रोच कैसे करोगे? आपने वीकडेज को गतिकल बोल दिया, तिथि को आप बिलीव ही नहीं करते, नक्षत्र को भी आप बिलीव नहीं करते. वेरी पॉपुलर फिजिसिस्ट हु आर सेइंग नहीं जी, योग का कारण तो कुछ है ही नहीं. Yoga is the addition of the sun and the moon's latitudes, longitudes, and Karan is the half of the angle. जब आप so yoga is आकाश and Karan is पृथ्वी. ये 5 तत्व है जो आपको 5 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताएंगे. तिथियों का वर्णन पुराणों में है, योगों का वर्णन सारा भगवत गीता में है. योग के बारे में थोड़ा सा तो आप विश्वकर्मा योग में पैदा जन्म हुआ आपका, किसी भी मतलब वो योग अगेन हाउ डज इट अफेक्ट अ पर्सन, और जो आप जिस योग में आपका जन्म हुआ उस तरह के आपके लक्षण होंगे. ओके, राइट. किसी योग में आप कोई कार्य शुरू करते हो तो उसके इम्पैक्ट उस कार्य पे, हाँ, उसमें प्रभाव पड़ेगा. दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स. सो you know, because we started with Kulhad economy, I don't want to go deep into this because then it becomes a Jyotish discussion. But let's take a very simple example. If you go on a date, or if you want to go and make somebody feel better who's in a hospital, what do you take? You take flowers. Right. Because पुष्प जो है वो आकाश तत्व के प्रतीक है. अगर आप आकाश तत्व अच्छा करोगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. तभी जो डेकोरेशन होते हैं वो सारे पुष्पों से होते हैं. और गेंदे के पुष्प तो बहुत प्रिय है. आप श्री हनुमान के मंदिर जा रहे हो तो आप मंगलवार में जाओ, क्षत्रिय का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में जाओ, पीले गेंदे के फूल लेके जाओ, सिंदूर लेके जाओ, चना लेके जाओ, गुड़ लेके जाओ. राइट. वो बता रहे भाई एक देवता को ये प्रसन्न करने के लिए है तो आप लेके जाओ. आप श्री लक्ष्मी के मंदिर में जा रहे हो, आप हल्दी लेके जाओ, नींबू की लेके जाओ. आपका नाम चतुर्वेदी है या नाम मेहरा है या नाम कुछ है, आप सनातनी इसलिए हो क्योंकि आप पंचांग को फॉलो कर रहे हो. वेदर यू आर फॉलोइंग और नॉट, आप दिवाली तो मना रहे हो ना. दिवाली आपको वैटिकन थोड़ी लिख के भेज रहा है, वो सऊदी अरेबिया से थोड़ी आ रहा है. इट इज देयर बिकॉज सनातन इज रनिंग ऑन द पंचांग. जब आपको वो समझ में आ जाएगा, then you will realize that the most important thing to do is to understand the panchang. Kulhad economy is running the economy on a panchang. Yes. So this long discussion, we finally come to this. Yes, that is the main essence of everything. And now let's come to Kulhad economy, because now Kulhad economy, right, I will draw parallels with what's going on in the world today. Yeah. Okay, for example, very quickly, when we talk about Sanatan, you can pray to Shiv. दुर्योधन के जन्म पे he is born on Amavasya. So there are a lot of hyenas which are howling. And he is advised, Dhritarashtra is advised, don't go and see your son, you should just let him go. Yes. तो उसको जंगल में छोड़ के आते हैं. There was an advisement. Right? Yes. So Dhritarashtra still goes and picks him up. Correct. And he led to the downfall of the kingdom. ये सारी चीजें उसमें पूरी
when you start to go deeper, महाभारत रामायण they are काल की एक स्टडी है वो. आप जब उसको ध्यान से श्री राम इज बॉर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र. करेक्ट. उनकी की पूरी लाइफ मैप ही वैसे हो रही है. ऋषि विश्वामित्र takes him to to secure the Havan his ashram and he does ताड़कावध. और उसके बाद उनको बोलते हैं कि आप अब हमारे साथ अनामंत्रित धनुर्यज्ञ में चलिए, सीता का स्वयंवर हो रहा है. ही इज नॉट इनवाइटेड देयर, बट वो मुहूर्त पे पहुंचते हैं, अपना विवाह हो जाता है. आई मीन दिस इज सच अ बिग थिंग दे टेलिंग यू. जब आपको बोला जाता है कि आप विवाह के मुहूर्त पे पहुंचिए, दे डोंट मीन गो फॉर अ कॉकटेल, दे आर सेइंग फेरों के समय पे पहुंचो. तब वहां देवी देवता प्रकट हुए हैं. दिस इज नॉट मिथिकल. us, as Hindus we should be working on Sundays, but आप संडे को हॉलिडे करके बैठे हो. As Hindus you should be working on Saturdays, आप सैटरडे को भी हॉलिडे करके बैठे. Typically our holidays were on तिथिस और on मंगलवार और बृहस्पतिवार. आप वो करोगे, the entire world benefits. The funny thing is, if India celebrates, the more India celebrates, the more economy does better. The more India's economy is done better, everyone does better. ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं. एप्पल ऑर्चर्ड को आपने लॉक करके उसको मिथिकल बोल रहे हो. भाई तो तुम्हारा टेस्ट यहाँ कहां से आएगा? That is something that I'm not able to understand. This is why I spent about 20 years until I had the final listing. Today I have it. That's why Swami Shivananda was a yoga master, lived for 129. 125 में तो उनको पद्मश्री मिला. आप वो डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रहे हो. अरे उनके पासपोर्ट की फोटो के साथ उनका न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क में सब में फोटोज, वॉल स्ट्रीट जर्नल में फोटो छपी हुई है. That I've got in my book, but Guinness बुक पे नहीं है, गूगल पे नहीं है. चैट जीपीटी से पूछो ओल्डेस्ट पर्सन अलाइव, वो नहीं दे रहा है. They're all नहीं, जापानीज, कोरियन, जापानीज लिव फॉर दिस लॉन्ग. अरे यहाँ के मास्टर्स have lived for thousands of years. नहीं वो तो है, because people are not documenting, studying, or they're not wanting to. Purposely. So when Einstein is saying that time is relative, he's talking in the realm of science. He's science का basis ही आपने गलत लिया हुआ है. Science defined ही, time defined ही नहीं है. Time तो defined ही वेदा में, तो the only truth is Vedas. So let me come a little bit to one. The destruction and the downfall and the start of the destruction of Bharatiya culture since the 15th century. Why do you think that started happening? And do you see from a Jyotish perspective or from a general study of your own that the rise of Bharat is restarting? Yes. Imminent. I mean, it's restarted. Okay, let me come back to it. Answer the questions in the format. So, 15th century, the delusion started that we've become everything, we've become supreme. That's when they went through this mass wiping out the continents. Australia wiped out, South America wiped out, North America wiped out, taken control. Red Indians, looted the wealth. India को बड़ा destroy करने की कोशिश करी. And again, this entire movement was centralized. Centralized. It's all European, right? Why European? Because the clocks were invented there. Accidental invention. Starts from here. And again, I'm not saying Europeans are bad today. It started by a group of people. Certain group of people, they've figured it out. So, please do not take this as Europeans are bad or this is bad. No, people in general are very good. Everybody is very good. People normally are very, I think what we're talking about is a certain power center that took control. Then, then today you have social media. And whatever you do here, America, your friend would already know. Your neighbor still might not know. But so imagine a time when this communication was not possible. The wealth was coming in, people started, rejecting it. They're like, great, wealth is coming, this guy's doing good. The guy might be earning $1 million, giving you $20, $30, $40 a day. For you, he's good. That's what was happening. So, wo jo loot thi began there. Then the construction of the history began there. So Julius Caesar writes, Shakespeare writes Julius Caesar. महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का मतलब रामायण लिखनी श्री राम के जन्म काल में करी. But Julius Caesar was written after 1500 years of him having been there by Shakespeare. Shakespeare, when you start reading him deeper, like, beware the Ides of March, and you're wondering why Ides of March, that's an astrological reason. Because सूर्य का मरण कारक स्थान मीन राशि में है.
Ides of March is Meen Sankranti, which is mid of March. Right? This question, the teacher didn't answer because she didn't even know. So when you start realizing this, so that whole appropriation started. So the demonizing of Jyotish started there because they're like, no, we fixed everything. फिर आप पूछते हो भाई why 20, श्री राम का हम जन्म का वर्णन कब बोलते हैं? चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी, जो पहला मास है हमारे लिए. करेक्ट. चैत्र मास is पहला मास. तो आप अपने जो अवतार का या whatever you calling son of God, he's born 5 days before the year is ending. How is it possible? Then there's like descriptions that Christ was not really born then, he was born much earlier. So why did he decide 25th December? When one reason that you really come down to which is strong is that winter solstice is happening at that time, 25th December. 2000 years ago it was happening that time. Now it's happening around 22nd December. So if the solstice is moved, why aren't you moving the date? But वो fix करके बैठे हुए हैं. तो जब आप इस चीज को समझते हो तो the whole appropriation started from there. Time travel का delusion started. H.G. Wells started writing about time. The movies started to be made about time. People are thinking, if we do something or the other, we can actually travel in time. There is no time travel possible. Unless, अब ये ललिता सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम में जब आप जाओगे तो गुणातीता, सर्वातीता, गुणातीता, लोकातीता, सर्वातीता, क्षमात्मिका. That is Lalita. That Devi Devata is above the lokas. Correct. You can logically arrive at it. But then to understand that you have to go deeper into it. So time travel at a physical human level is not possible at all. हो नहीं सकता. You might be saying no, some scientists have done this. Sorry यार, वो आपने आज बोला है, कल फिर बदल जाएगा. और besides, आपने time को define ही नहीं किया. It's like me saying, sir, मैं ना air travel करूँगा. अरे air है क्या? How are you traveling in it? Ocean है क्या? Unless you know what the texture of the ocean is, how can you make a ship? So time travel is possible when you define time. Time का definition ही नहीं है. आप travel किस में कर रहे हो? That is where the whole delusion started. So the loot started because you're unaware of the consequences. See, I'll jump in an ocean if I'm thinking, हाँ यार वहाँ पर ना mermaids होंगी. Who's told you यार वहाँ alligators होंगे, नीचे बड़ी बड़ी sharks होंगी, they can swallow you. आप time को समझ ही नहीं रहे हो. वो पौराणिक stories में आपको समझ में आएगा. So that delusion led them to do the mass scale destruction. So between these two destructions, they've slaughtered in excess of 9 billion people. In the past 1500 years. And countless animals. जितने scientific experiments are, सारे rats, This is saying across the globe or mostly the Indian subcontinent? No, across the globe. Across the globe. That is how, so that the fallback will have to be on something, no? Yeah. So we are thinking that the karma is recorded somewhere up in the sky. No, it is recorded in you. Correct. Yeah. That is what Pitra Dosh is. वो आपके ही genetics में आ रहा है. You are still connected to your great grandfather, no matter how much you try to disconnect. The whole delusion of individualism comes when you say, "Here, I am an individual. I'm not connected." You are interconnected with everything all the time. जो मैंने किया है, उसका भुगत मेरी संतानें उसको भुगतेंगी. Right. जो वो करेंगी या जो मेरे पूर्वजों ने किया होगा, वो मैं भुगत रहा हूँ. जो प्रारब्ध कर्म है, there is nothing more logically explained than it is in the Vedas. Yeah. Suddenly आपको कुछ disease हो रही है, मतलब two people sitting in the same place experiencing totally different reality. Correct. वो आपको समझ में आना शुरू होगा when you understand the Panchang. वो Panchang is distributed by nature. So Kulhad economy is distributed production by nature. The moment you mistake that is when you start destruction. क्योंकि Henry Ford, I'll give a very common example. Henry Ford says you can have any color car you want as long as it's black. Because he realizes कि यार coloring a car will take me the longest time. तो इस process को ही मैं काट देता हूँ. लोगों की mentality change कर दो. Their whole thing, people don't know what they want until you give it to them. तो उनको black कर दो. You can have any color car you want as long as it's black. Even you're seeing it in the industry today. Yeah. Like a red car will be insured at a much higher rate. Yeah. Actually, there is no statistical study. But ठीक है वो कर रहे हैं. आज आपको सारी गाड़ियाँ एक ही uniform color की मिलेंगी. Brown ये वो. But that reflected in everything. So India used to have 200,000 varieties of rice, which is then reduced to 1,700 because they purposely killed all those rice varieties. Because that is one thing that is used everywhere. Sankalp में आप अक्षत लिखते हो. Yes. Once you understand that particular bit, that destruction, taking control, production, industrialization comes in from there. 15th century. Yeah. But data, and again I've quoted this in my book,
India was richer than US is even today. Pre-industrialization. So industrialization is not the root of wealth creation. So let's just break this myth right here, right now, that the West has gotten rich Yeah. through the process of industrialization, Yeah. mass production, Yeah. systemized production, Yeah. for which then they created engineering courses called systems engineering, Right. operations management, Right. All right. and it's basically about standardizing things. And the way you standardize something is, like you said, you can have any car you want as long as it's black, which means play on the human psyche. Right. So you have your advertisement, you have your marketing campaigns. When they wanted to, sell corn or sell sauce or sell their processed meats or something like that, that's all they advertise. When they created a factory to sort of mass produce that thing. Without taking control into account what the soil is like. So they treated soil like dirt. With complete disregard for any natural resource. Exactly. The soil is dirt. Or sustainability of the natural resource. Right. Could be future generations also will have to come and eat and everything. Now I'm coming to the next part. Ye to hai hi. This is a given. This is what they did. And this is what they want to do in India, which is why they're pushing. Right. Cut to today, cut to the problem with Trump and Modi standing up for the Indian farmer and the Indian fisherman, that we don't want to introduce this mass commercialization of food in our food pipeline, which will destroy our farmers. Absolutely. And destroy it, forget the farmers, destroy it for you and me as general citizens of the country, because we won't get the choice of food anymore. Right. We will just get one standard grain every year and that's it. Right. So it's even detrimental for us. So every citizen of this country should understand and stand up for it and support the country. So that's one. But coming to the GDP, which is the product, gross domestic product, achieved through this industrial economy, what you and I are saying is that the Kulhad economy, which is a decentralized economy, which promotes distributed across the country, which means every nook and corner is an economically viable and a feasible hub of commerce and trade, thereby generating income and profits. The sum total of a Kulhad economy, which is a sustainable, decentralized, autonomous economy operating at the human level in each hub across the villages of India, is greater by multitudes than the GDP of a mass commercialized industrial economy. That's the statement. That's the underline. Uska basis है time. उसका बेसिस है टाइम, ऑफ कोर्स, बिकॉज हम एक चीज को अपने मुहूर्त के अनुसार, अपने वेद के अनुसार, गोइंग बैक टू आवर रूट्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू what is the basis of everything. When you apply an effort, you and I making an effort towards something. When you apply an effort, you want the best possible result. Absolutely. ठीक है ना? ये इंटेंशन हर एक ह्यूमन की होती है, यार मैं 2 पैसे लगाऊं 200 बने या 2000 बने. ये नहीं कहते यार 2 पैसे लगाओ तो 3 बन जाएंगे तो बढ़िया रहेगा. हाँ, एग्जैक्टली. ठीक है. तो वो 200 और 2000 करने के लिए क्या चाहिए? मुहूर्त, पंचांग. अरे वो तो बहुत you're going deep. That's why I said let's keep it very shallow. अभी को बोलते हैं यार कैलकाटा में सूर्योदय बड़े जल्दी होता है, सनराइज बहुत पहले. यार कैलकाटा में सूर्योदय उसी समय होता है, आपकी घड़ी गलत है. आप इवन इंडिया हैज टाइम जोन. एग्जैक्टली. फॉरगेट भाई, मेरा टाइम जोन है, योर टाइम जोन इज आवर टाइम जोन. तो मेरा सूर्योदय, मैं सूर्योदय पे उठूंगा ना. आपको अपने हिसाब से वहां की तिथि और अनुसार पंचांग और वो देखना है. एग्जैक्टली. एंड थोड़ा बहुत वेरिएशन है. अगेन स्पीकिंग ऑफ टाइम, Ujjain, right up to the 18th century, was the measurement of time for the entire world. उसको अजीन बोलते हैं सऊदी अरेबिया में. So the measurement of time is only over here, by the way. Yes, and which is why Shri Mahakaleshwar is an Ujjain, because again, Kal is time. We are praying to the god of time in the city of time, exactly, at the meridian of time. Exactly. तो भाई फिर लुट गए हो गया when you took the GMT. Right. You started calling it Greenwich रहने चाहिए वो, फिर अपने कहानियां बना दी अपने जो बनानी है. So we would rather that India bring back its own time meridian, let the others follow. Right. You know,
and this is good for the whole world. It's Uh. not like we're saying any Hindu. Everyone is a Hindu. Uh, The moment you realize that Australian honey is not good for you, Australian honey is good for Australians. आपके लिए दिल्ली के आसपास के गांव का जो honey वो that's good because the bees are the ones. The moment you understand that, it is applicable to everything. yeah. जो यहाँ जैसा अनाज हो रहा है वो अच्छा है. आप अगर जर्सी गाय को लेके यहाँ से उत्तराखंड में जा रहे हो, that's bad. The moment you realize जो जहाँ की गाय है, जो जहाँ का पशु है, वो वहाँ के लिए बेस्ट है. Everything will start benefiting. And you start to benefit because you're not really maximizing it. So the only request I have to people now is, of course, consume natural. Of course, do this. We need to restore the whole time back. Everyone should aspire to at least plant, and by plant I mean take care of 10 trees every year. It's nothing. Yeah. I do at least 1,000 every year. I'm saying, यार आप कम से कम 10 तो बो दो, and make sure you water them. Make sure they're cared for. We would have solved our problems. But कौन से पेड़? आम के पेड़, कदम के पेड़, नीम के पेड़, पीपल के पेड़. आप वो पेड़ बो ही नहीं रहो. Today people are busy building buildings. मुझे तो I go crazy. That's why I don't like to come to NCR because there is so much of dust, so much of construction. Where is this population coming from? आप global data देखो, population is going down. Correct. बच्चे किसी को हो नहीं रहे यहाँ पर. So who's going to buy these flats? Who's going to rent these flats? Even the fertility is going down, right? So when you start to get to it, we have a very simple ask, and that's Kulhad economy, which is in tune with the local. Okay, so let me come to this for a second. You have taught some courses on Kulhad economy. Right. So Kulhad economy is a proper AICTE approved 3 credit 30-hour course. We teach it. So IIT Mandi we just taught it. It's a massively successful course. Well, can you just in 2 minutes, 3 minutes, give us a brief structure of the course? So, like I said, Kulhad economy is about critical thinking. The reason I decided, and again, we went through a lot of back and forth. We could have called it anything else. Peter Lacey, for example, dear friend, head of Accenture, circular economy. So people say it's like circular. No, it's not like circular economy. It is not Jugaad economy. Circular economy assumes the presence of industry. I'm saying without the industry also it will work. Jugaad economy is finding the cheapest, quickest solution to a problem we're facing today. Kulhad economy is finding the most sustainable, possibly the most expensive solution, which will survive for a long time. And when therefore giving the highest value creation. And when I say most expensive, that is not necessarily in terms of money. It is in terms of understanding the problem. आप प्रॉब्लम को समझे ही नहीं हो. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल आर सेइंग कि उत्तराखंड में पानी कम हो रहा है, पहाड़ों में पानी कम हो रहा है. उत्तराखंड में बारिश की तो कमी नहीं है. तो आप कुएं खुदवाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, लेक्स बनाओ. ये पहले अगर आप again you read my books, Nestle CEO specifically talks about this. We need to take control of their water and air. This is all planned. सारे कुएं तालाब ये सब बंद करवाए गए हैं सिंस द ब्रिटिश टाइम की. यार इनको तो भांग आपको डिमोनाइज कर दी कि वो ड्रग है. अरे आप किसी को बोलते हो कि यार ये मत खाना है, जहर है, तो कोई नहीं खाएगा अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है. बट भांग प्लांट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ वुड, फाइबर, क्लॉथ, पेपर, एवरीथिंग ग्रोज इन 6 months. तो उस तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज राइट हियर विद अस. We're just not doing it. हम सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम सोच के कह रहे हैं अच्छा यार ये प्रॉब्लम होगी. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, उत्तराखंड में है. उनको कितनी बार बता दिया गया कि and they themselves understand eucalyptus trees are sucking up water. But you go हर हाईवे में लगा रखे हैं. हर हाईवे पे लगा रखे हैं. So who do you think has put this? हमने तो नहीं लगाए. लैंटाना लगाया हुआ है. Lantana was bought by Lady Lantana. If even if the Britishers, like you, in some aspects, see the actual evidence of things that they have done to us and left the country with, where are our brains? That's what I'm saying. Why have we uprooted those trees so far? Exactly. So when you asked me, what got me here? This. But इसको justify करने के लिए, I've had to go back that far. भाई यहाँ से change हुआ है. India's land is left 40 to 50% unarable because of lantana, Congress grass, eucalyptus, pine trees, और ये सारी की सारी करनी अंग्रेजों की है. So am I saying go and punish them? नहीं यार, वो सब गया. तुम तो जगो अब. Until you wake up and start changing those things, you cannot expect things to start happening this way.
So I want to come a little bit that not everybody is the same. Right. So आप and so this is going to be a little different from the rest of the previous conversation. How do you find your purpose in life? Because not the way you're saying it sounds too simple कि हर एक आदमी जाके खेती करे. नहीं भाई साहब, अजय जी, हर एक आदमी खेती के लिए नहीं नहीं बना. बनाया. मैं खुद नहीं बना. हाँ. ठीक है. हाँ. तो from your Jyotish study, Right. or from your principles and research, can you talk a little bit about this? If my phone, let's say, stops working or has some problem, and I tell you, Ved, yaar, mere phone kaam nahi kar raha hai, what's the first question you'll ask me? You'll probably ask me, what brand is it? Right. कौन सा फोन है? कौन सा फोन है? हाँ. ये सैमसंग का है. तो यार यहाँ पर बाहर जाके नेहरू प्लेस में एक शॉप है. हाँ. आईफोन है. तो वहां जाके वसंत विहार के इस वाले कोने पे ये वाली शॉप है. यू कैन गेट रिपेयर्ड. सो आई इमीडिएटली गूगल. अच्छा यार, वसंत विहार में आईफोन की शॉप है, वो कितने बजे से कितने बजे तक होती है? यू नॉट गोइंग टू टेल मी कि यार कुपर्टिनो में गो टू सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और टिम कुक का मैं नंबर देता हूँ, वो जाके फोन ठीक कर देगा. व्हाट रबिश. बट पीपल आर टॉकिंग दिस. ओके, दैट इज द कुल देवता कॉन्सेप्ट. आपके कुल देवता ऐसे ही हैं. कुल देवता आपके कुल से जुड़े ना. फिर स्थान देवता है, ग्राम देवता है, कुल देवता है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है. देन इट्स ग्रोस. तो आप महादेव और माता पार्वती, माँ दुर्गा पे जाने से पहले गो टू योर कुल देवता फर्स्ट. हाउ आर यू कनेक्टेड टू देम? Like I said in the beginning of the conversation, belief word was only coined in the 15th century. Belief is love. I'm feeling the love. I'm feeling the love for this bulb. I can't really explain why I'm feeling it, but I'm just feeling it. But Vishwas is not that. V is special. Shwas मतलब मैं अब श्वास से इस चीज से communicate कर रहा हूँ. Most of the times, and you can do this experiment anywhere, start your stopwatch. Make 2, 3, 4 number of people, whatever number of people that, and I've done the experiment multiple times. I said, all your realities are different. You don't realize it. For a moment, stand there and look at a clock and try to time your breath to the clock. वो करते हैं, उनको 2 मिनट 3 मिनट दे दो. ठीक है, अब टाइम कर दिया. ओके, नाउ यू क्लोज योर आइज एंड से व्हेन यू आर रेडी. तो 3-4 लोग हैं खड़े हुए. अब स्टॉप वॉच शुरू करो एंड टेल देम व्हेनेवर इट इज 1 मिनट और 30 सेकंड्स, व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद, कि 30 सेकंड्स पे अगर मान लीजिए सबको सील करो, 30 सेकंड्स के बाद whoever thinks it's 30 seconds, with your closed eyes, raise your hand. And you will realize one person will raise their eyes at 20 seconds, one will raise hands at 1 minute, one will raise hands at 45 seconds. So your perception is totally different. This is your purpose, literally. This is where you're building it back from. Building blocks यही है ना. अब मैंने 3 चीजें बताई, ग्राम देवी, ग्राम देवता, स्थान देवी, स्थान देवता. That's your primary deity. Not God, deity, source of light. Number 2, your breathing. Your breath pattern will determine how you do this. The moment you tune in, इस फोन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं नहीं बता सकता. Even the shopkeeper will first thing will ask you is brand कौन सा है, फिर वो पूछेगा मॉडल कौन सा है, फिर उसको पता है फिक्स पैक कौन सा लाएगा. अगर फोन ऑन नहीं हो रहा है, he'll start opening IMI नंबर देखेगा. That's exactly what you are, right? You're born at some place. आपका गोत्र, राशि, नक्षत्र, ये सब टेक्निकल थिंग्स, यू नो, मिथिकल थिंग्स. आपकी कुंडली है ना, पूरी कुंडली. कुंडली से ग्राम देवती को कनेक्ट कर रहे हो, फिर आपकी ब्रीदिंग आई. यहां से आप अगर उस सोर्स पे ही कनेक्ट नहीं हुए, यू आर आस्किंग मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस यार मुझे फोन ठीक करवाना है, मुझे ब्रांड नहीं पता, मॉडल नहीं पता, IMI नंबर नहीं पता, तो ठीक क्या करवाना है भाई? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है इज अ वेरी टेक्निकल थिंग. That people are not wanting to answer. I don't believe in this. Then how am I going to tell you what your purpose is? Your purpose could be becoming the king of the United States 20 years from now. But that encoding has been done here. And for the people who say, no, anybody can do anything, great, I do it. It has to come from somewhere, no? You're breathing. Either you say, I don't believe in it. Something is working inside you. The breathing is working inside you. I'm going to connect that to a point in our conversation. When you went in Kedarnath and you met your guru, did you discover your purpose at that time? Yeah. I mean, it started getting clear. Or started getting clear. But that was the first moment of... Yeah. So, आप श्री कृष्ण को देखते हो. So, for example, श्री कृष्ण example, right? अब श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र है. रोहिणी नक्षत्र के जो चिन्ह है, रथ है, चक्र है, तो उनके नक्षत्र से, ठीक है. आप कोई भी
भागवत पुराण पढ़ेंगे या किसी भी पुराण में अगर आप पौराणिक स्टोरी में मतलब श्री कृष्ण का जब वर्णन आता है तो कौन से वृक्ष का वर्णन है? कदम्ब के पेड़ का। माँ वह बैठा कदम्ब के यमुना तीरे कदम्ब के पेड़ पे। कदम्ब ट्री इज रोहिणी नक्षत्र ट्री। इसी तरह सारे पेड़ वो कहानियां इतनी शैलो नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, वो आप समझ नहीं पाए। एक तो हमने अंग्रेजों को यहाँ बैठाया कि इनको समझ में आ गया, मैकॉले को समझ में आ गया, चर्चिल को समझ में आ गया, वो तो जड़ मूर्ख थे। उन्होंने तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को मतलब दे लाइक प्लेन इज बेसिकली अ थ्री व्हीलर, तो जी थ्री व्हीलर चलाने ऑटो रिक्शा वाले को चलाने को बोल दो। अरे यू आर सेटिंग अ फ्यूचरिस्टिक स्पेसक्राफ्ट, देयर थिंग्स दैट आर एनकोडेड, दे लाइक अ many things over there. When you start understanding that, तो आपको रोहिणी नक्षत्र के लक्षण पता चलने शुरू हो जाएंगे। अब जिस गांव में मैं ये बना रहा हूँ, द्वारा नाम है, द्वार, द्रोण द्वार, द्वार जो चिन्ह है वो विशाखा नक्षत्र का है, उसका स्वामी बृहस्पति है, तो द्रोण गुरु है, गुरु का वर्ण है पीला, वहां मुख्य खेती हल्दी की होती है, मेरा विशाखा नक्षत्र है, करेक्ट हूँ। अब जब मैंने ली थी वो 25 साल पहले, इट्स लाइक अ टोटली, बट व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, दे आर देयर, आप देख नहीं पा रहे हो। द मोमेंट यू से आई डोंट बिलीव इन इट, देन यू नॉट अंडरस्टूड। सॉरी, आई जस्ट मेक दिस सिंपल। द मोमेंट आई से आई बिलीव इन साइंस, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग साइंस। साइंस टू बी सपोज्ड टू बी अंडरस्टूड एंड क्वेश्चनड। साइंस तो पूरी बेसिस ही थीसिस पे है, साइंस पे कोई परम सत्य है नहीं, साइंस नॉट लुकिंग फॉर ट्रूथ, वेदा इज ट्रूथ। आप वो समझे नहीं, आप कह रहे नहीं, आई हैव दिस डिस्कशन एंड दे से नो नो दैट्स योर बिलीफ। I have no beliefs, zero beliefs. You can prove this, otherwise I'll take that. मैं तो पूरी परम सत्य की बात कर रहा हूँ। सत्य क्या है? काल सत्य है। That's why श्री कृष्ण is काल, काली is काल, महाकाल तो है ही काल। Which also brings us to very interesting point I want to make. The British or the West doesn't understand. Yeah. And you don't, honestly, you should not care. They can't understand. They can't understand. They keep saying कि भी ये polytheistic. हाँ जी, हमारी डुअलिटी में इतनी सिंगुलैरिटी है और हमारी सिंगुलैरिटी में इतनी डुअलिटी है कि भाई साहब एक साधारण दिमाग के ना ये बस की बात नहीं है। तो तभी we can be, in fact we should be proud कि we are born in a genealogy which can understand the complex. तभी तो हम भारतवर्ष में जन्मे हैं। पहली बात ये तो हमारे पुण्य के हम यहाँ जन्मे हैं। Exactly. Because आप महाकाल की पूजा करो, ओके, आप फिर भी मोक्ष प्राप्त कर लोगे। आप श्री विष्णु की पूजा करो, श्री कृष्ण की करो, फिर भी आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। आप माँ काली की करो या माँ दुर्गा पार्वती की करो, फिर भी आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो ये हम सबको अपने अपने प्रकृति और विचार अनुसार एक माध्यम दिया हुआ है to reach the ultimate. Exactly. And none of us fight within each other. Yeah. It is not that there are 2-3 branches of Christianity, they're always fighting against each other, or 2-3 branches within anybody else, they're always fighting. We have so many branches, yet we are one. Exactly. तो हमारी duality में ही हमारी singularity है। ये कैसे कौन समझे? ये अब ये समझाओगे ना, आप काल से ही समझा रहे हो। आप कह रहे हो आप गणेश चतुर्थी मना, चतुर्थी को मना रहे हो, आप सरस्वती पंचमी मना रहे हो, बसंत पंचमी मना रहे हो, दुर्गा अष्टमी मना रहे हो, तो भाई मैं दुर्गा अष्टमी मना सकता हूँ, गणेश चतुर्थी मना सकता हूँ, ठीक है। आप जब वो समझ जाओगे, आप नहीं हम तो December 25th को ही मनाएंगे। अरे December 25th ही नहीं है, तो मना क्या रहे हो? So ours is Devi Devta, which is very, very different from what it is to now. Right. So Ajay, we have been speaking of the Coulard economy and how it's a decentralized system so that you are able to create economic feasibility and viability no matter where you are, the villages and places, and being true to your purpose, which you have explained that one can be true by first knowing the Sthan Devta, Gram Devta, Devi Devta, and also the Kundli to some extent. And just like you were giving the example that if your phone is spoiled, then you first will ask, na, कि कौन से make का phone, and you'll go to that particular make. So then that's how that is the parallel you're drawing with the Gram Devta and Sthan Devta, and the Kul Devi Devta, correct?
and then the next parallel may be the nakshatra and Right. those things that you are born under. So, with the whole Coulard economy system, what is the next step that you've taken? You've taught the course at IIT Mandi. Right. How many batches have you taught so far? 2 at IIT Mandi, but IMI, there's been many batches. IIM Rohtak, there have been many batches. Okay. Similarly, across, you've got several colleges, institutes that have been teaching. The idea is that the course is a 3-credit course, 30-hour course. It's customizable, of course. For schools, we'll do it differently. The idea is a course culminates in the festival, which is Coulard Economy Festival. Right. So KEF is sort of the distributed way of what a World Economic Forum is trying to do. Right. But this is like the Kumbh of the economy. So half the arts, crafts जो लुप्त हो गए हैं अब, जो आप बोल रहे हैं लुप्त हो गए हैं, आप अभी जाएंगे सब जगह सब मिलेगा, लेकिन उनको प्रकट कैसे करेंगे? Right. आप कोई शिल्पकार को बोल रहे हैं कि भाई आप ये करिए. अब जैसे उड़ीसा में जो टेम्पल, जो मंदिर जिन्होंने बनाए हैं, Right. उस शिल्प कला से Right. उनके पास काम ही नहीं है. पिछले 6 जनरेशन से बेचारे किसी किसी को बोल रहे हैं, उनको मिल ही रहा है. तो जगन्नाथ धाम किसने बनाया है, कोणार्क मंदिर किसने बनाया है, उसको आपने मिथ्या बोल के 1000 years old बोल के you let it go, but that's not the thing. तो उन तरह के लोगों को आप किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं? तो मान लिया there is a college in Bhubaneswar. We can literally start with a Coulard Economy Festival there, a Coulard Economy course being taught. The students then approach these different places. They bring together this pack. So, like I was saying, there are students coming from across India to this particular place. There's a Mandi mein, there are people students from Kashmir, from Tamil Nadu, from Gujarat, from Mumbai, wherever. All of them come here. You point to the villages around, they don't know what villages are around Mandi. Let alone the crops that are being grown, let alone the local arts that are known. Suddenly, after this course, they've started to recognize it. Right. That is how they broke the backbone of the education system. एजुकेशन सिस्टम में हमें कुछ पढ़ने की कमी नहीं है, हमें प्रॉब्लम है हम कनेक्टेड ही नहीं है. अगर आप एक नॉर्मल बच्चे से पूछोगे टमाटर का रेट क्या, आलू का रेट क्या है, उसको नहीं पता, एमबीए कर रहा है, तो इकोनॉमी का क्या पता होगा. एंड इलेक्शंस, चुनाव तो प्याज के दाम पे जीते और हारे जाते हैं. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट वी आर लिटरली डूइंग इनजस्टिस टू आवर यूथ. व्हेन पीपल से कि यार आज के यूथ ऐसे हैं, मिलेनियल्स ऐसे हैं, Gen Z, ऐसी, I think they are perfectly fine. The problem is with the people who are transmitting it. Right. When we wake up is when the entire thing starts to turn, and that is what Coulard economy is. So starts with critical thinking. Get the students connected to the local economies. Right. Get them to celebrate this in a Coulard Economy Festival. Yeah. So in IIT Mandi, we were able to do this, and it was a phenomenal success. Right. Where literally the locals who had come, जो वहाँ के, और हिमाचल में तो बहुत अच्छी आर्ट्स हैं, जो वीविंग है, Yes. they came and they said हमें ऐसा लगा जैसे वृंदावन में आ गए. And there was no liquor, no meat stalls, local foods, local arts, local music. Yeah. Everything is celebrated. Yeah. आप जब तक उसको दिखाओगे ही नहीं, तब तक आप celebrate कैसे करोगे? And that is what the idea is. The moment we start doing this in every college, every university, every school, twice a year, every year, imagine the kind of GDP growth that you experience. Absolutely. Right now आप experience ही नहीं कर रहे हो. आप एक यहाँ पर दिल्ली हाट लेके बैठे हो, आप एक यहाँ पर काला घोड़ा फेस्टिवल कर रहे हो, where the people are coming from across India. Why aren't you doing it everywhere? When was the last time आपने, मुझे नहीं पता, मैंने last time let's say जबलपुर की न्यूज़ कब देखी थी? Correct. मैंने जबलपुर का शायद नाम भी नहीं सुनाई दिया. या मैंने ऋषिकेश की न्यूज़ कब देखी थी? आपको न्यूज़ दिखती है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, because that is how they've concentrated you. Right. The entire Western model works on urbanization. तो उनका ये पूरा फोकस है, इनको urbanize कैसे करो. Yeah. Harvard में one of our professors was basically about this, urbanization. I said, what are you talking about? Everybody can't be urban centers are literally becoming centers of disease. Right. People are today picking houses because that's close to a hospital. Pick a house close to a forest, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे. You know, so the thing is, that is distributed economy. The idea is to grow it this way now. Yeah. And so Coulard Economy Festivals can
run throughout India, Throughout India, anywhere. anywhere, and they're sort of, does one have to take any ownership, or the ownership of the people over there can? So, of course, the course is, owned Course- by me right now, Huh. as is the intellectual property of Kulhad Economic Festival. But that's like TED. Yeah, Right? TED will eventually license it to you. You teach it. Yeah. It has to be taught in a particular way. yeah, So right now we've got like modules, and we'll help the students get it, and then we expand it. The idea here is, आप सीखनी तो चीजें शुरू करो. Problem with this is, see, I've spent about 20 years and about 1.5 crores in just getting this research done. Today, I did not start talking about it until I was absolutely certain कि यही reason है. And this, when I started to understand, कि हाँ यार ये तो है, और time की कहीं definition ही नहीं है. जब टाइम की डेफिनेशन ही नहीं है, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि कलकत्ता में सनराइज अर्ली नहीं हो रहा है, कलकत्ता में सनराइज उसी समय हो रहा है, आपकी घड़ी अर्ली है. द प्रॉब्लम इज, आपने घड़ी स्टैंडर्डाइज वहां पर कर दी. आई कांट से दैट आई एम सिटिंग ऑन लेफ्ट ऑफ इकबाल. अरे आई एम सिटिंग वेयर आई एम सिटिंग, ही सिटिंग ऑन माय राइट. तो आप तभी मिडिल ईस्ट जो आपके वेस्ट में है उसको मिडिल ईस्ट बोल रहे हो, और ईस्ट में जो आपका बंगाल है उसको आप वेस्ट बंगाल बोल रहे हो. यही तो पर्सपेक्टिव का फर्क है ना. दिस इज बिकॉज ऑफ अस. व्हाई आर वी कॉलिंग आवरसेल्व्स ब्राउन कंपेयर्ड टू whom? हम डेवलपिंग नेशन कहां से हो गए भाई? थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहां से हो गए? किसने डिसाइड किया? आइडियली वी शुड बी लाइक वी आर द वेल्थी, ये लूटर्स हैं. आप अपनी टर्मिनोलॉजी चेंज करोगे तभी तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा ना. आप वो टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो. तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर. I'll give it a term that I like. It's just come in my head. Bharat Resurrection. या We are now working on Bharat Resurrection. सो कुल्हड़ इज फंडामेंटली दैट. बारिश होती है, मिट्टी गीली होती है, कुम्हार कुल्हड़ बनाता है सितंबर अक्टूबर. Correct. कुल्हड़ बना के वो मार्केट में बेचता है. दिवाली टाइम फ्रेम, त्योहारों का समय आ गया. त्योहार शब्द आता है तिथि और वार से. त्योहार, हमारे त्योहार तभी तिथि वार है ना, वो आप तभी बना रहे हो. Right. तो उस समय आया, फिर वो कुल्हड़ बने, वो मिट्टी के दिए बने, वो मार्केट में बिके. मार्केट में वेंडर ने उसको प्रोडक्ट को ऑगमेंट किया और कस्टमर को बेचा. कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज किया और मिट्टी में फेंका. ये कुल्हड़ एक सिंबलिज्म है, इट्स अ मेटाफोर. The moment you understand that, that is why circular economy doesn't work over here. Because circular economy assumption is that there is an industry over there. And we're not anti-industry. I'm saying industry itself can be a part of this. Industry is a subset of this. Right. So when Trump is saying tariffs economy, वो कह रहे हैं भाई टिम कुक एप्पल फोन आप अमेरिका में बनाओ. Tim Cook doesn't feel the gravitation of a nationalist sort of that an Indian would feel or a Hindu would feel to Bharat Bhumi. Right. He's saying यार मेरे को 80% profit अगर Apple से आ रहा है, why would I make the phone in the US? I'm going to make it where the best it suits me. That's what individualism all about, right? Capitalism. But the capitalism itself is a misnomer. Uh-huh. Capitalism technically is what you can make the best of. You make the best of that and you create the maximum value for yourself. Over here, it is about aggregating reductionism and then mass producing it. Same thing, no? You can have any color car you want as long as it is black. Had now he done it in a distributed manner, you need to really ask this question: why isn't India producing any engine so far? And this is a technical question we can answer later. So, to conclude, Yeah. what can you give us from the Bhavishya Malika to sort of? See, Bhavishya Malika is talking about large scale things, again, not for the common man. The eventual thing is that Bhavishya Malika talks about very simple things. It says you will be saved, you'll be perfectly fine as long as you do Trikal Sandhya. Trikal Sandhya is a very technical concept. कि आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठो. Right. ब्रह्म मुहूर्त पे ब्रह्म गायत्री, विष्णु गायत्री और रुद्र गायत्री. अगर आप ये 3 संध्याओं को ऑब्जर्व करते हो, सूर्य को जल अर्पण करते हो, गायत्री मंत्र करते हो और संध्या वंदन करते हो, you're good. It's about awareness, right? I can't say while the door is in this direction, you can perfectly fine exit the building from here also. You can't. Acknowledge the door, exit the door. If you acknowledge it, then I say, I don't believe in this door, I'm going to exit through the wall. Well, you're going to just bang your head. Any predictions that you can tell us about? So it talks about very interesting predictions. It talks about, Pakistan being a defunct state, which is right in front of you. Talks about the wars. It talks about
animals coming into the wild animals coming into the cities. I mean, he's talking about because he knows कि भाई इस तरह का अगर development, see, the moment your time has become linear, time didn't become linear till the clock was invented. Right. जितने भी असुर हैं पूरे सारी पौराणिक कथाओं में, आप समझना नहीं चाह रहे, आप समझ पा ही नहीं रहे हो. All they're telling you is they're trying to control time. And when I say असुर, आपके दिमाग में वो दो सींग वाले ऐसे लोग, असुर मतलब सुरों से परे हैं वो. सुरों से परे. तो सुर कितने? 7 हैं, 7 ग्रह हैं. वो जितने लोग बोल रहे हैं कि उन ग्रहों से हमें फर्क ही नहीं पड़ता. I don't know what to say to them. Until the sun comes out, you do not get photosynthesis in the plants. The plants won't grow. Correct. Everything is interconnected. It's a conscious universe. It's a charachar jagat, forever moving. The moment you understand that, then you understand that all of that prediction is this. So he says, he could see that the moment the asur has a भ्रम कि भाई मैंने टाइम को कंट्रोल कर लिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रशियंस ने ट्राई किया, राजा रिपुंजय ने ट्राई किया है, हिरण्यकशिपु ने किया, रावण ने किया, यही आज भी हो रहा है. यू आर सीइंग पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स लाइक देयर इज नो एंड. The population is going down. Who are they going to live in these places? The moment you understand that, and he's saying wild animals will start coming to the cities. Are they? Tigers have been spotted on highways. आगरा मथुरा हाईवे जो है वहां पर टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड. देहरादून में लेपर्ड्स हैव बीन स्पॉटेड इन मेन सिटी. So this is happening. He says this is when the decline will start, and that's why it's happening. Mass scales. I mean, it's talked about. You know, वो ध्वजा उल्टे डायरेक्शन में जाएगी, चील सर्कल करेगी, जगन्नाथपुरी में 3 टन का पत्थर गिरेगा, वो गिर चुका है. वो हो गया. They can't make out where it's fallen from. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं which is already mentioned. So for this me, will lead to what? I mean, it is leading to. It is talking about Yuga Parivartana. Now, when I talk about Yuga Parivartana, people say, no, but these many years are left. That is what you're not able to understand. You might have in your kundli that you live till 100, but if somebody comes and willfully stabs you, that's free will. Your free will is this, in your arms. I have the free will to make a call to get a nuclear bomb detonated, let's say hypothetically, in somewhere, XYZ place. This is my free will. I can pick up my phone and make it the call. Whether it happens or not is out of my will. The signals go out, completely out of my will. Correct. Whether that thing gets detonated or not, out of my will. Everything has to align, no? Yeah. जब आप वो समझ जाते हो तो आपको बेसिकली इतना कंट्रोल करना है, कॉन्शियस ब्रीदिंग, त्रिकाल संध्या, एंड यू लीव ऑल दीज तामसिक फूड्स. जितना सत्व गुणों पे जाओगे उतना आप ठीक हो. हिरण्यकशिपु को यही तो था ना. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. ही इज लाइक जब तक परमात्मा की, जब तक श्री विष्णु नहीं चाहेंगे तब तक सत्व गुण आप करो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एक जो मंत्र उच्चारण आपको आपके गुरु ने, जिसने दीक्षा दी, आप वो मंत्र करो, वो ठीक है. गायत्री साधना करो, किसी मंत्र की साधना करो, नाम जाप करो. द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स सत्वगुण, यू आर सेव्ड. नो मैटर व्हाट, नथिंग कैन किल यू. Excellent. Okay. I think this brings us to a wonderful end for today. Yes. And I think there are other discussions in the pipeline which we can do later and speak more about, again, as and when your events happen. We'll speak more on Kullad economy. Sure. As and when a festival gets lined up, we'll try and do an episode, give out dates so that people can maybe participate. So we'll try and do those things, and we'll try and create, I think, a good run-up for people to even start subscribing to your KEF course. Or maybe even try and do something together through our podcast and launch a course for maybe even 8 to 10 year or 8 to 12 year olds. Sure. Just to get them oriented to things. Totally. So thank you so much. Jai Shri Lovely. Ram. Jai Shri Ram. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Thank you Guru so Namaha. much. Shri Matre Namaha. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.